ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। आज हम यहाँ पे जुड़े हुए हैं अंकित भाई से फ्रॉम ऑलमाइटी ब्लूज एफसी एंड अधिदेव गुरु हमारे साथ यहाँ पे है। कैसे हैं आप लोग भाई लोग? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया बोथ ऑफ यू फॉर कमिंग ऑन द चैनल एंड वी आर वेरी एक्साइटेड टू हैव दिस कन्वर्सेशन। एंड हमारे साथ में भाई लोग भी जो हमारे साथ ये पूरी लाइव पॉडकास्ट देखने के लिए जुड़े हैं गाइज, आप लोग को भी बहुत बड़ा हाई एंड हेलो। आई होप यू गाइज आर ग्रेट। तो क्या हाल है ऑसम अधिदेव ऑसम। सर एंड अंकित भाई? यार गुरुजी आप बोलिए पहले। यार गुरुजी लॉन्ग टाइम नो सी। गुरुजी आई एम लाइक चेल्सी ऑन द बैक फुट, तो थोड़ा सा पीछे ही बैक फुट में रहते हैं। आपका क्या हाल है? आई थिंक यू फॉरगेटिंग कि हम भी चेल्सी के जोन से ही है, ऑल्दो वही तो। a lot of other people have made me a Spurs fan. I'm a Juventus fan. I'm भाई सबका fan, ठीक है। बट एनीवेज आई एम आल्सो ऑन द बैक फुट एज अ चेल्सी फैन। बट हाँ भाई, लाइफ चल रही है काफी सही। आफ्टर लॉन्ग टाइम जी भाई के चैनल पे आए, व्हिच इज क्रेजी नाइस। आफ्टर द मैसिव माइलस्टोन, आई डिडंट गेट द अपॉर्चुनिटी टू कांग्रेचुलेट हिम, सो कांग्रेचुलेशंस जी भाई। And to the whole Talk Football HD team, crazy milestone, definitely काफी बड़ा bold step था to do what you're doing, but to achieve success through that bold step is a massive accomplishment. तो वो एग्जैक्टली। तो प्लीज भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दैट। एंड और क्या मतलब, किसके साथ शुरू करना, कौन सी टीम के डाइसेक्शन के साथ शुरू करेंगे? कौन सी टीम के हाँ बताओ देखिए बताओ। देखिए अभी सबसे ज्यादा रीसेंट मेमोरी में तो अपनी मैनचेस्टर यूनाइटेड और लिवरपूल की टीम है, तो हमने मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे में काफी सारी बातें की, बट आई डोंट वांट टू रियली टॉक अबाउट यूनाइटेड, जो कि हम मुझे पता है कि हम कर ही लेंगे, वो आ ही जाएगा कन्वर्सेशन में। मैं सोच रहा हूँ कि लेट्स टॉक अबाउट लिवरपूल। आई रियली हैव टू टॉक अबाउट लिवरपूल की मैंने अभी एक आज रिव्यू डाला था जिसमें यूनाइटेड के बारे में काफी बातचीत हुई है। विल कीप एन आई ऑन दैट एज वेल, बट आई जस्ट हैड टू पे एन अटेंशन टू दिस लिवरपूल टीम without their star man Sadio Mane, with their injured midfield creator in Thiago, a lot of injuries in Keita, Matip, Konate, एंड हर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा जाता है क्लॉप से कि व्हाट अबाउट द न्यू साइनिंग, व्हाट अबाउट न्यू मिडफील्डर। क्लॉप हमेशा कहते हैं कि इट वुड बी नाइस, इट वुड बी नाइस, बट देन वी आर लुकिंग एट द राइट प्लेयर एंड द मैनेजमेंट नोस कि इट वुड हेल्प अस। तो what the scene currently at Liverpool is going on? Adidev sir, आपसे start करता हूँ। What do you think कि with this current squad of the players that they have, do can they really throw in a title charge? Can they really throw in a charge in the Champions League as well? Because लास्ट टाइम भी हम ये सेम क्वेश्चन वंडर कर रहे थे कि क्या लिवरपूल के पास इनफ डेप्थ है कि वो चैंपियंस लीग एंड टाइटल चार्ज इन द प्रीमियर लीग दे पाएंगे, एंड वी सॉ व्हाट हैपेंड, मिसिंग द लीग बाय 1 पॉइंट, चैंपियंस लीग में फाइनल लॉस। अगेन कैन दे डू दैट दिस सीजन एज वेल, और इज इट टू बिग एन आस्क? नहीं यार, आई थिंक दे डू हैव द रिसोर्सेज फॉर दैट, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन वेदर द रिसोर्सेज आर फिट इनफ टू प्ले इन द फर्स्ट टीम। क्योंकि अभी अगर हम कल का एक केस इन पॉइंट ले, तो कल के मैच में अगर आप देखोगे, यूनाइटेड पूरा ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड के फ्लैंक को बहुत ज़्यादा टारगेट कर रही थी। कुछ शायद 40% ऑफ देयर अटैक्स वर कॉन्सेंट्रेटेड ऑन दैट पर्टिकुलर फ्लैंक। और ये चीज़ इसलिए ज़्यादा हो रही थी क्योंकि आप देख रहे थे कि जो गोमेज और वैन डाइक की जो पार्टनरशिप थी वो बिल्कुल नहीं सही चल रही थी, बिकॉज दे वर लीविंग, जो गोमेज वाज लीविंग स्पेसेस बिटवीन ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड एंड हिमसेल्फ। और एक चीज़ भी है कि जो गोमेज वाज लीविंग स्पेसेस बिटवीन हिमसेल्फ एंड वैन डाइक एज वेल, तो जिसको बहुत अच्छी तरह से यूनाइटेड एक्सप्लॉइट कर रही थी। और शायद वो स्पेसेस को कवर करने के लिए आपके पास एक हार्वी एलियट है, जिनका नेचुरल पोजीशन ये नहीं है कि डिफेंसिव मिडफील्ड पे खेले, उनका नेचुरल पोजीशन है एक प्लेमेकर, ही इज अ प्लेमेकर। So he is not expected to probably, position himself in defensive transitions. He's not expected to do that, but he was doing that because Liverpool थोड़ी handicapped हो गई थी वो जोन पे, क्योंकि ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड was caught high up more often than not, ठीक है। तो वो चीज अगर आप वो सब चीजों को नजरअंदाज करेंगे, क्योंकि दे डू हैव अ फबिनियो इन द विंग्स। फबिनियो को बहुत लेट लेके आए थे क्लॉप, इन माय ओपिनियन फबिनियो को बहुत लेट लेके आए थे उधर। आई थिंक आई पुट द ब्लेम ऑन क्लॉप कि उन्होंने मिसमैनेज कर दिया थोड़ा गेम को, ठीक है। कि फबिनियो को थोड़ा और जल्दी लेके आते थे, थोड़ा और जल्दी शट शॉप कर सकते थे, और जो लेट सर्च किया लिवरपूल ने टुवर्ड्स मैनचेस्टर यूनाइटेड, वो थोड़ा जल्दी कर आ जाता तो शायद शायद एक पॉइंट लेके जा सकते थे गेम से, शायद, ठीक है। दैट्स अ ह्यूज शायद, बट एक चांस होता। सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू इम्प्लाई कि दे डू हैव द रिसोर्सेज, it's just how you use them. You can't expect Harvey Elliott to help you in defensive transitions. Yeah, absolutely. You can't expect that. He's still a kid.
He's still a kid. And basically, Adidev sir, he's kind of a kid who likes to attack more, who has naturally played as a winger more than played as an eight. And Klopp has made him, play in that eight wala role where he is हाँ bound हाँ to create from the middle of the park, and where हाँ he's got that responsibility कि भाई तू tuck in कर, तू हम्म, Hendo के पीछे जा, because even Hendo is not comfortable playing in that central roles, playing in that and without position exactly. Fabinho in that role, not able to cover the tracks, not able to mark or understand where the Ideally, Bruno he should Fernandes run will not be. play deeper than Hendo. He should not play deeper than Absolutely. Hendo. यही तो. How is that's a crime? You can't expect a advanced playmaker to play deeper than Henderson. That is a Unless crime. that's a Leo Messi. Unless that's a Leo Messi, that's नहीं a different वहीं पर category. actually we should be criticizing Klopp, to be honest. He's one of the managers whom I am a big fan of Klopp, really speaking. लेकिन having said that, भाई आप देखिए Fabinho आपके पास है, तो Fabinho शुरू नहीं कर रहे. हेंडरसन जब हम सब मतलब we can see not only in his form, वो उसका prime position है ही नहीं. He's not your core player जो kind of just sits back and defense. He's not a Eric Dyer जो करते थे Eric Dyer for England. आप that is what you expected him to play in that match, वो नहीं है वो. फेबिनियो एक रीजन मैं बोलूंगा, नॉट जस्ट द एक पोजीशन एलिमेंट बट आल्सो द हाइट और फिजिकलिटी. वहां पर फेबिनियो कैन गिव लॉट मोर कंपेयर टू हेंडरसन. और लॉट ऑफ अस थॉट कि भाई फेबिनियो क्या इंजर्ड है, क्या ये है वो है, मतलब वी थिंकिंग लॉट. हो सकता है क्लॉप इतने सारे इंजरी साथ में देख लिया और मे बी ही इज लर्नड अ लेसन फ्रॉम द सीजन बिफोर लास्ट कि भाई इतने सारे इंजरीज हो गए, लेट्स नॉट प्ले आवर एस प्लेयर्स एवरी मैच, क्योंकि हो सकता है ये भी अगर चल जाए. लेकिन आई थिंक अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड एट ओल्ड ट्रैफर्ड यू हैव नो अदर ऑप्शन बट टू प्ले हिम. आई एम सॉरी बट आई थिंक क्लॉप क्लियरली फॉर वंस डिड ओवरथिंक. वो नहीं करते जनरली बट ही रियली डिड ओवरथिंक. और आई थिंक गुरुजी इज एब्सोल्युटली राइट. यार हावी एलियट आपका बेस्ट वर्च्यू क्या है? हावी एलियट इज द बेस्ट गाय हु काइंड ऑफ ओवरलैप्स योर मोस्ट साला एट टाइम्स, और यहाँ पर उल्टा ही हो रहा था. तो आई डोंट थिंक दैट मेक्स एनी सेंस. And especially when you have a Trent, or the whole point of why Hendo has played in that right side of the midfield बहुत सारे मतलब साल के लिए अभी, because he protects Trent or he wasn't able to do that. Or I don't think you expect Javier to do that. And not just that, center half maybe remember Trent के बगल में कौन था? Joe Gomez, and Joe Gomez is not who plays week in week out. So you need double protection. और Fabinho जैसा बंदा start कैसे नहीं कर सकता वो game में? I don't know. It's almost like जब Pep didn't start, a DM in Champions League final. Champions League final वो गुंडोगन के साथ जाते हैं ओवरथिंक करके. Exactly, I was coming back to that point as well. Do you think what the hell happened to Joel Gomez? He's मतलब Joel Gomez was a decent player. मतलब whenever he used to play, he used to have a rock solid performance. And अभी is it because कि काफी time से he has been out of the fray, and यहाँ पे because Matip and Van Dijk has, because आप कितने भी अच्छे player हो, if you're not playing day in and day out, आपकी वो match sharpness नहीं रहती है. वो वाले पोजीशन पे मोस्टली मैटिप या कोनाटे खेलते थे. ठीक है, मैटिप या कोनाटे खेलते थे. तो आई थिंक ही इज बीन आउट ऑफ रेकनिंग फॉर अ रियली लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम. सो पेयरिंग हिम अप विद वैन डाइक अगेंस्ट, जब आप यूनाइटेड को भी देखोगे ना, यूनाइटेड द वे दे अप्रोच द अटैकिंग ट्रांजिशंस वाज वेरी सिमिलर टू द ओले गुनार सोल्स्टायर वाला सेटअप. वाज वेरी सिमिलर टू दैट. बिकॉज अगर आप देखोगे दे टुक एडवांटेज ऑफ मिस्टेक्स फ्रॉम लिवरपूल प्लेयर्स. जॉर्डन हेंडरसन का आई थिंक सेकंड गोल में ही जॉर्डन हेंडरसन के मिस्टेक की वजह से काउंटर आया. ठीक है, एक काउंटर की वजह से they just got a goal there, and they were sitting well. जब आप देख लो, sitting in a mid block. United was sitting in a mid block, nice little mid block. They kept almost every person man marked in the midfield. हेंडरसन के साथ एक बंदा every time track कर रहा था. और अगर आप ये सब चीजों को अगर आप टैली करोगे विद ओले के सेटअप के साथ, there wasn't too much of a difference. The difference was कि डेविड डे गिया was punting all the balls to Trent Alexander-Arnold वाला सीन. ठीक है, with Ole Gunnar Solskjaer, David De Gea was punting it everywhere, but this time there was a direction कि भाई इधर हमको exploit करने का है, and this is what we need to do. We will need to get the ball higher up the pitch. We need to clear the ball away from our own danger zone. एक और interesting बात थी यहाँ पे कि in terms of their clearing the ball long, nobody expected them to win the first ball. वो first ball win कर नहीं सकते because they don't have ball winning players in the team up top. So what they were doing is कि they were fighting for the second ball.
एंड Yeah. एवरी सिंगल टाइम आप देखिएगा जब भी वो गोल किक लॉन्ग गई है, आई थिंक 80% ऑफ द टाइम्स यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड हैव वन द सेकंड बॉल बिकॉज ऑफ द इंटेंसिटी इन द प्रेसिंग. बट देन अगेन Yeah. कमिंग बैक टू लिवरपूल, यहाँ पे फैबिनियो का ना स्टार्ट करना, इट्स बेसिकली बिकॉज आई थिंक ही वाज नॉट फुल्ली फिट. तो एक Fully काइंड fit. ऑफ एक प्रिकॉशन था दैट Yeah. केप्ट हिम आउट ऑफ दिस गेम एंड हिंडो खेल रहे थे. Hmm. अगेन कमिंग बैक टू दैट मिडफील्ड का एक वॉइड जो यहाँ पे लिवरपूल की टीम में है, माने का वॉइड एक बड़ी टीम में है. Nunez is not playing. He has been suspended. But then यहाँ पे सबसे important question मानव भाई जो कह रहे हैं यहाँ पे, Van Dijk has been a bit too passive post injury. He doesn't commit to the tackle much. More like he checks the run until the end to make a standing block. And ये मैं कई मैचेस में ऐसे ये चीज होने के बाद कई मैचेस को मैंने नोट किया है. एक हाईलाइट से यहाँ पे आई सॉ कि पिछले कुछ मैचेस में वैन डाइक मतलब वो स्टेप ऑन करके मार्क नहीं करता. जैसे आप एग्रेसिवनेस देखते हो एरिक गार्सिया में बार्सिलोना, और रोखो चढ़ के खेलता है, मिलिटाओ चिपक जाता है प्लेयर्स के साथ. यू नो व्हेनेवर द प्लेयर हैज द बॉल, द डिफेंडर स्टेप्स ऑन एंड मार्क्स द गाय बीइंग एग्रेसिव. जैसे कल लिसांद्रो मार्टिनेज कर रहा था, डिफेंस की पोजीशन छोड़ के ही वाज गोइंग अप टिल द मिडफील्ड मार्किंग एंड टैकलिंग द बॉल. वैन डाइक डजंट step on to the guy, aggressive नहीं है. ये बहुत सारे पंडित्स भी कल कह रहे थे he has to have that little bit of aggressiveness in his defending. वही वो 2019 वाली vibes के साथ लेके डिफेंड कर रहे हैं, काफी मीम भी बन रहे थे उसके. So what do you have to think about that? वो पहला जो गोल था, what do you think? हाँ जी अंकित सर बिल्कुल. क्विकली मैं आ पाऊंगा यार. वैन डाइक इफ आई एक्चुअली केयरफुली नोटिस हिज गेम, मतलब हिज गेम वाज नेवर दैट, वो एक एलिमेंट था ही नहीं उनकी गेम में. हिज गेम वाज ऑलवेज दैट ही रीड्स द गेम एब्सोल्युटली ब्रिलियंटली. क्यों बोलते हैं वैन डाइक इज द रोल्स रॉयस, यू नो ही कैन डू दैट. हाँ फिजिकल एलिमेंट है उनमें, वो कर सकते हैं और किया भी काफी दफा, लेकिन दैट्स नॉट ही बेसेस द गेम ऑन. और अभी what is happening is I'm rather saying that over the years maybe at some point your forwards, your oppositions will kind of suss you out, will kind of read your game. Or it's not a secret that finally you know you had a Mitrovic kind of you know opening them up in the first game. और वहीं से there are certain weak spots when you know that, especially when he doesn't have a partner जहाँ पर वो 100% depend कर सके, he will be little bit more kind of एक होता है ना back on the back foot versus when he has someone who's you know playing with him week in week out. तो यहाँ पर वही हुआ at that moment. Maybe I think Bruno Fernandes ने बहुत अच्छी चीज बोली थी. He said that Liverpool kind of knew what to expect from Manchester United. So we had to do something what they did not expect. और इसीलिए वो चढ़ कर आ रहे थे, you know, when you're talking about winning the second balls, not going for that first ball. So they were creating that extra space in that second, जहाँ पर Van Dijk was probably expecting them to go for that ball and he was just okay, they're not going, so let's just sit back. Or it is where he's too late. Van Dijk definitely मैं बोलता हूँ he has to work on his game. थोड़ा सा I think the fact that oppositions have studied him so much, I generally believe that वो he can use his physical element इतना and he can actually. मित्रोविच वाला गोल याद है आप? मित्रोविच वाली पेनल्टी याद है? इंसिडेंट आपको सिमिलर इंसिडेंट था जहां पे ही वाज ट्रैकिंग बैक एंड अलाउइंग मित्रोविच टू रन एट हिम एंड वैसे हमेशा लाइक व्हाट यू हैव बीन सेइंग इज कि वैन डाइक का ये गेम हमेशा से रहा नहीं. ही इज नॉट द गाय जो कि काफी एग्रेसिवनेस के साथ खेलता है. ही इज द गाय जो कि यू नो एंटिसिपेट करेगा वेयर द प्लेयर इज मूविंग एंड यूज हिज बॉडी, यूज हिज फुट बिकॉज़ ही इज टॉल एंड ही कैन स्प्रेड हिज लेग्स सो वेल. तो ही कैन टैकल एंड निक द बॉल अवे फ्रॉम द प्लेयर. तो ये चीज करते हैं वैन डाइक. बट देन लेटली वी हैव सीन कि अ फ्यू प्लेयर्स गेटिंग अ बेटर ऑफ हिम, जैसे मित्रोविच ने लास्ट टाइम किया. And yesterday as well we saw a few players running at him. Martial turned him around a few times very nicely inside aake holding the ball and turning around passing. So we are not criticizing Van Dijk over here because of course he is a great defender by one of the best defenders. एक चीज मैं ऐड ही करना चाहूंगा उसी पॉइंट पे. एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, even criticizing him for the first goal is an overreaction. क्योंकि मेरे हिसाब से ऐसा मुझे क्यों लगता है, क्योंकि अगर आप फर्स्ट गोल भी देखोगे, he is acting as the first and the second centre back for Liverpool because Joe Gomez is nowhere in the scene. Joe Gomez is nowhere in the scene. And they've said Milner committed at the very first opportunity he got. Milner and Alisson एक साथ जंप मारते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे. आपके I think to the right of Virgil van Dijk there was a United player. ठीक है, so the person who was taking the shot, हाँ, I think Bruno था. The person who was taking the shot had उंगली करके डायरेक्शन बोल रहा था. The person who was taking the shot had an option to pass it to Bruno or to shoot. So Van Dijk had to position himself in a position where he's able to take care of both the things, which he couldn't in the end. But that was what his intention was, which I completely get. क्योंकि आपके पास आपका एक मैटिप उधर है, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड तो भाई वो जॉग कर रहा था भाई. सॉरी गोमेज उधर है, गोमेज के पीछे.
हाँ वो भाई वो देख रहा है गोमेज को यार, हाँ, वो उधर देख रहा है गोमेज को कि गोमेज उधर टैकल कर रहा है। अरे भाई अगर गोमेज तेरा काम कर रहा है, अगर वो हाफ स्पेस में, तू अंदर हाँ, आना भाई, तू टैकल करना और उधर। अरे गुरुजी ट्रेंट वही की तो है, इनअवेलेबिलिटी। देखो Van Dijk cannot trust a Gomez as much as what he trusted Matip, और यस, वहीं पर हुआ एक सेकंड, you need a second, that's football for you, that's defending, और वही उस सेकंड में Van Dijk ने ट्रस्ट नहीं किया तो ही took a back foot, और वहां पे जो ट्रेंड को करना चाहिए था वो किया नहीं, that is what I'm और एक saying, और तो वहां बात पर है क्रिएट हो गया अंकित स्पेस। सर, ट्रेंट की जितनी भी कमियां है ना वो मैटिप और कोनाटे बहुत अच्छे से हाइड करते हैं। ट्रेंट की जितनी हाँ डिफेंसिव फ्रेलिटीज हैं वो बहुत प्यारे तरीके से दोनों कवर करते हैं बिकॉज ऑफ द मूवमेंट, अंडरस्टैंडिंग एंड कनेक्शन विद द डिफेंसिव पार्टनरशिप ऑफ वर्जिल वैन डाइक। वरना ट्रेंट वुड नॉट बी एज कंफर्टेबल एज he is when playing with these guys। कल एक्सपोज हुआ ट्रेंट काफी बार एंड यू कुड सी कि एक्चुअली एक सरप्राइजिंग बात ये थी कि द मेंटालिटी मॉन्स्टर्स वर लिटरली स्ट्रगलिंग, they weren't able to kick their passes। आप देख सकते हो कि एलिसन was not able to pass। एलियट Yeah. ड्रॉप कर रहा है, एलिसन से पास रिसीव करने के एलिसन बाहर मार दे रहा है। हेंडो Yeah. was misplacing the passes, you could see कि they have gotten into their heads। या आप वैन डाइक की भी क्रॉस फील्ड पासेस आपने ज्यादा देखे नहीं, बिकॉज ओपन ही ना, नहीं हुए हैं चैनल नहीं कि हुआ। वो वैन डाइक अपने ट्रेडमार्क क्रॉस फील्ड पास दे पाए, डायगोनल पासेस दे पाए, वो भी नहीं ओपन हुए ज्यादा चैनल उसके लिए। आप रॉबर्टसन हैड अ वेरी बैड गेम, जो अभी बोल रहा है मानव बोल रहे हैं, Robertson had a very bad game. So I think people have started to understand that targeting the wide regions is where you definitely can hurt Liverpool, and that is where the importance of the left center midfielder and the right center midfielder comes into play. These two midfielders really 100%. need to be on their toes for the whole of 90 minutes or for the span of the 90 minutes that they're on the pitch, so that Liverpool can get a result. So ये दो position rather than the wide positions, ये दो position बहुत ज्यादा अहम रहेंगे लिवरपूल के लिए इन देयर टाइटल रेस, द लेफ्ट सेंटर मिडफील्ड पोजीशन, द राइट सेंटर मिडफील्ड पोजीशन। एग्जैक्टली, नहीं सही कह रहे हैं। एंड इवन मानव भाई यहाँ पे बता रहे हैं अपने ओपिनियन देते हुए कि सांचो ने काफी अच्छे से रॉबर्टसन को पिन बैक करके रखा था। एंड नॉट इवन सांचो, मानव भाई, यूनाइटेड के दोनों विंगर्स ने लिवरपूल के दोनों फुल बैक्स को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल किया था अरे व्हेन दे हैड एलांगा द बॉल। मतलब बढ़िया, व्हाट अ परफॉर्मेंस मैन, 45 मिनट, बट दैट वाज लाइक वाओ, व्हाट परफेक्ट अ एकदम। परफॉर्मेंस बाय हाँ, यंगस्टर। और यहाँ ही पर केम। हाँ, रॉबर्टसन का बहुत से पॉइंट है, बिकॉज I know Luis Diaz इतने बार he was yes, taking on his place, he was trying his level best. I know Varane pinned him down proper, लेकिन इतने बार he was waiting कि भाई एक सेकंड आ जा भाई, मुझे ओवरलैप कर, कोई था ही नहीं वहां पर। Robertson wasn't even overlapping. I don't know what is happening कल। एक बार भी मैंने So unlike। ओवरलैप नहीं देखा है रॉबर्टसन का कल के हाँ मैच में, एक बार भी नहीं देखा। आई डोंट रिमेंबर हैविंग अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ओवरलैपिंग रन्स फ्रॉम रॉबर्टसन। नो इवन नो वन। ट्रेंट का मुझे याद है, बट रॉबो ट्रेंट को ने मौका बहुत तक नहीं कम, मिला। ट्रेंट ने बहुत कम किया, बहुत कम, मतलब इन हाँ। हाँ इन हिज कंपैरिजन बहुत कम किया उसने ओवरलैपिंग रन्स। इवन राइट, और अंडरलैपिंग रन्स जो करता है वो कभी कभी उसने भी वो भी कम किया वो है। भी नहीं मारा, साला और इसी ट्रेंड का। का तो साला यार, हाँ सॉरी, हाँ, लेकिन ट्रेंड का डिफरेंस है ना, ट्रेंड तो वो खड़े खड़े वहीं से पास मारता है, ही ट्राइड ट्वाइस, आई अर्ली रिमेंबर, एक क्रॉसेस। लुइस डियाज हाँ ऑलमोस्ट हाँ मिल भी गया था, लेकिन गोलकीपर काइंड ऑफ वो डाविडिया केम अप एंड नहीं, स्वीप्ड वो इट आउट। एक्चुअली वरान वाज ओवर देयर, ही मार्क्ड हिम, जो टच ओके, लुइस वरान वाज डियाज ने देयर। टच लिया इन द बॉक्स एंड ही टर्न्ड अराउंड, तो वरान केम इन देयर। तो डालो ने काफी अच्छा काम किया एक्चुअली। ये लुइस डियाज की बात हो रही थी यहाँ पे, आई क्विकली वांट टू पिच इन कि वो जो मार्किंग थी ऑफ द रन्स ऑफ लुइस डियाज, वी वर होपिंग कि लुइस डियाज इसको फाड़ेगा क्योंकि ये अब लुइस डियाज के बारे में आप जानते हैं, लास्ट मैच में ही स्कोर्ड अ वंडरफुल गोल कमिंग इनसाइड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, और हाउ दे वर एबल टू मैनेज, एंड यहीं पे टीम वर्क आती है। और एरिटे ने क्या बोला था मैच में जाने से पहले कि इट डिपेंड्स ऑन how you play together। ये टीम है, this they can fucking play football but only when they play as a team। तो they played as a team। मैं यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर प्लेयर को मैं नहीं कह सकता कि आज ये इसने फाड़ डाला। People have been talking about Lisandro, he had a great game obviously, but the whole work of the team made them play like that। Why do you think McTominay played good? What was the reason? It was because he had that the defensive support, he had एक that शील्ड। Dallo and Malacia का support shield। Exactly, Ankit sir। तो all of these things led कि United early capitalize करे, और वो atmosphere you would have seen, मैं यूजुअली कमेंट्री ऑफ रखता हूँ, बट कल बस एक्सपीरियंस करने के लिए मैंने थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा रखा था यार, बस मैं फील ले लूं वो ओटी का। वो एनफील्ड बना के इधर ओटी रख दिया था। नाइस नाइस। नहीं नहीं वो तो वही है चेंज होता है ना गुरुजी, लाइक एवरीवन इज थिंकिंग मैच होगा कि नहीं होगा, एंड देन आप देखिए, मतलब यू गेट दैट स्टार्ट ऑफ द गेम, द एटमॉस्फेयर चेंज टोटली। मतलब इवन आई वाज लाइक, आई वाज नॉट डूइंग वॉच अलोंग, मैं देख रहा था क्योंकि मुझे वही है, सम मैचेस यू जस्ट वांट टू एक्सपीरियंस इट, एंड दिस वाज वन ऑफ दोस मैचेस, आई हैव टू एग्री No, दैट। absolutely, absolutely. I mean, it depends on whether this intensity that United showed, whether they can keep this intensity Carry, for the rest of the season. If they can, I think top four is, I think it's a given for them. If they can keep this intensity the way they did. right।
Right. हमने लिवरपूल के बारे में बात किया. We talk about the midfield. We talk about the defense. Let's come forward and talk about the forwards. Firmino being over there, unable to do the work that he was supposed to do. Firmino is the gel, and he's the link between the front three of Liverpool, who made Sadio Mane and Mohamed Salah tick together for so long just because they were operating closer to him. हम देखते हैं लिवरपूल की टीम में the wingers, they are not spreading the pitch apart. They are closer to Firmino ताकि वो एक टैंडम में इनसाइड आए, मूव करें, जब फिरमिनो ड्रॉप करे, लिंक अप करे, एंड उनके फुल बैक स्टॉर्म करते हैं. कल थोड़ा सा एक डिफरेंट अप्रोच हमको दिखा, जहाँ पे वी सॉ बोथ ऑफ देयर विंगर्स बीइंग फार वाइड एंड द फुल बैक थोड़ा सा इंटीरियर आने की कोशिश करते हैं व्हेनेवर दे कैन. तो ये जो डिसजॉइंट फ्रंट थ्री हम लोग को दिखी. अधिदेव सर, व्हाट डू यू हैव टू थिंक अबाउट फर्मिनोस परफॉर्मेंस? जब व्हेन वी सी कि फर्मिनो ड्रॉप कर रहे थे ना, तो उसके ऊपर मैकटोमिने हमेशा से चढ़े हुए थे. द फर्दर्स्ट गाय इन द लिवरपूल टीम फर्मिनो यूजुअली नहीं होते हैं बिकॉज इज अ फॉल्स नंबर 9. तो वो उनकी एवरेज पोजीशन पूरे मैच में इट वाज लोअर देन जेम्स मिलर. तो ही वाज देयर इन द मिडफील्ड टू प्रोवाइड एन एक्स्ट्रा नंबर टू वो उसकी थियागो की वो जो इनएबिलिटी उसको कर्टेल करे, क्योंकि वो क्रिएटिविटी वाले पार्ट में हाथ थोड़ा सा बढ़ाए. बट इतना अच्छा जॉब किया यहाँ पे मैकटोमिने ने उसके ऊपर. व्हाट डू यू हैव टू थिंक अबाउट दैट? नहीं, आई वुड डेफिनेटली पुट इट डाउन टू द लैक ऑफ मिडफील्ड क्रिएटिविटी, क्योंकि आप आई ऑल्सो ब्रिंग अ बारसा का एग्जांपल, आई ब्रिंग अ चेल्सी का एग्जांपल इनटू द पिक्चर as well. So there are games when Lewandowski has to drop into the midfield to probably influence the game. You can, it's criminal to expect Lewandowski to drop into the midfield because you just can't see that. If that's happening, then you're doing something wrong. Let's come to Chelsea now. Chelsea में we are actually saying कि भाई strikers ये strikers वो strikers ये strikers वो. Leeds game 0.72 xg. With that particular xg, how you blaming strikers? So that is the primary point that I wanted to put across. There was no supply. When they miss Thiago, they miss a person who has the ability to pass between the lines. Fabinho, also an ability to pass between the lines. Matip, also an ability to pass between the lines. All three of them have an uncanny ability to pick out a player between the lines, so that अगर ये तीनों खेल रहे हैं तो तभी कोई टीममेट बोल सकता है ठीक है हम ड्रॉप करेंगे between the line because हमारे पास बॉल आएगी. भाई कोई था ही नहीं. And because they're marking out passing lanes also really well, United were marking out passing lanes really well. That's exactly why nobody probably attempted those risky passes as well, because they were scared कि भाई मतलब United counter पे पेल देगी, because that's exactly what was happening. They had the pace. Marcus Rashford arguably had a pretty decent game. ठीक है, apart from that one missed chance, he had a pretty decent game. वो one missed chance भी 3 लोगों को कटा के अंदर आया था वो. ठीक है, तो I think that is when you talk about Firmino, very quiet game, but I'll not completely pin it down on him. It's just a lack of midfield creativity. Exactly. सही बात कही यहाँ पे. We all have seen कि what Firmino can do. He has played in that position only. वही खेलता है वो, वहीं से वो ऑपरेट करता है, and he has been a very good player for Liverpool for so many years. But इस point of time पे can we all agree कि Liverpool को थोड़ा सा एक fresh brand of एक कह सकते हो breath चाहिए, that they need a few more jolts in the team? Or should they continue just like this? देखो, you can all say that यार एक लिवरपूल काइंड ऑफ मेंटालिटी प्लेयर अवेलेबल है क्या मार्केट में, द राइट प्राइस, दैट वाज क्लॉप इज काइंड ऑफ सेइंग, और इतने सारे मिडफील्डर्स है जो आई नो इंजर्ड है, काफी सारे लगे. अगेन नाबी केटा दे बॉट फॉर बिग मनी, दे नॉट यूजिंग हिम इनफ. इन सर्टेन गेम्स ही हैज डन वेल, इन सर्टेन गेम्स ही हैज बीन मिसिंग टोटली. बट somehow आप देखिए जनवरी के बाद why did Liverpool do so well despite Mane moving centrally? Because of the fact that they got someone who was not only a team man but was एक spark job बोल रहे हो ना, that was Luis Diaz. I think sometimes you need a breath of fresh air to kind of freshen up the things, maybe in midfield just for competition alone. और I know when Thiago came उस समय भी मुझे याद है तो उसका पहला ही मैच, if I'm wrong, please correct me chat, yeah, I think if I'm not wrong वो चेल्सी के साथ था, जहां पर he came on at half time or something like that, जहां पे he kind of controlled जब Christensen went off, तो एक spark मिला था because they had something different. Thiago जब आए थे लिवरपूल में, at that time they didn't have that kind of a passer, that kind of a visionary player. और again Luis Diaz जब आए थे, it was a totally different kind of a winger that they got. So they have to had scouted someone who kind of freshens up that midfield, because like Guruji said as well, yeah, वही at some point your teams will suss you out. You will basically play the same thing, or you will
You cannot repeat. अब heavy metal football कितना देर तक आप चला पाओगे, right? आप देखो, talking about Firmino was absolutely fantastic 2 seasons ago. क्यों? क्योंकि he used to drop back और आपके wingers or rather wing backs used to bomb on like anything because that was the plan which was working. Because अब opposition अगर pin back कर रही है आपको, you don't have that space created or already Luis Diaz is your pin up boy, आप mark होंगे, तो you need to have a plan B option जो नहीं है आज लिवरपूल के साइड में. In my opinion, they should have gone like, for example, a Matheus Nunes, something else in midfield, because Thiago, हमें सबको पता है भाई, he is injury prone. As much as he is good, he is very very injury prone. And I think that ilk of a player एक चाहिए था लिवरपूल को. Matthias Nunes really में मैं सोच रहा था कि towards the end वहाँ पे pounce करेगी लिवरपूल, because Klopp was talking कि they need and right player. पता नहीं कैसा feel होता है कि they would want to open their banks for Jude Bellingham, but अभी ऐसा feel होता है कि Madrid चढ़ जाएगी. अब who knows what will happen, but a lot of talks have happened about Liverpool versus Manchester United. But यहाँ पे एक comment यहाँ पे लेना चाहूँगा मिशन का. UEFA is planning to announce sanctions in the next month for 10 clubs who have breached FFP rules up to 2020-21, including Barcelona, PSG, Juve, Roma, Inter Milan. Wow, खटिया खड़ी होने वाली है. But I don't think so कि बार्सा ने कोई रूल ब्रेक किया है. They have sold their assets and उन्होंने I think अपने FFP के अंडर रह के काम किया है. I'm not pretty sure कि how that would be. भाई this is 2020-21 ना, तो उस समय I think वो salary cap was kind of I think gone over if I remember right. काफी ऊपर थी वो, around 80-85%, काफी high percentage पे थी ऑफर रेवेन्यू पे थी. या तो लाओ क्या करोगे, कोई दिक्कत नहीं. अभी क्या सीन अभी तो ये सब रूमर्स है, देखते हैं, मतलब once it becomes a proper thing तब देखते हैं. अभी से क्या सोचो यार. अभी but isn't it so funny, right, Guruji? UEFA themselves are kind of sanctioning. मतलब it always is so funny. The funniest thing यार, सही में यार. How मतलब क्या बोले यार. खुद हिपोक्रेसी है. खुद के घर में कीड़ा है और आंगन में झांक के देख रहे, अरे उधर कीड़ा है भाई, उधर हिट मारेंगे. खुद के घर में कीड़ा है, हिट नहीं मारेंगे. सेविंग देयर ओन एस, और कुछ नहीं है. दूसरों के आंगन में. क्रेजी, मजेदार. वो नहीं यार, मिशन A1 बाबा, देखते हैं हम यार क्या सीन होता है यार, इसका बात करेंगे. एक लास्ट पॉइंटर इस पूरे कन्वर्सेशन को लेके, यूनाइटेड वाले को लेके. व्हाट अबाउट Cristiano Ronaldo? Ankit sir, what about this guy? He was on the bench looking at applauding the goals. What about him in the next games? देखो, मतलब मैं सच में बोलूंगा, मैंने प्री मैच डिस्कशन के साथ I was very surprised. I was shocked कि भाई अगेंस्ट लिवरपूल, और क्यों? क्योंकि मोर ऑफ द लीडरशिप एलिमेंट. अगेंस्ट ब्राइटन आपने देखा था, द गाय केम ऑन एंड यार बाकी लोग उड़ गए थे फॉर द सेकंड हाफ. सो आई थॉट दैट अगेंस्ट लिवरपूल इज एसेंशियल. लेकिन अगेन maybe Ten Hag saw something in that friendly जो खेले थे. I know it was just a friendly, totally आप नहीं जज कर सकते हो, लेकिन Anthony Martial, आपके Rashford as well as basically Sancho had something going in terms of that fluency in attack plus जो pressing बोल रहे हो आप. Maybe he saw that, or reality भी है, Elanga can definitely do that much more than Ronaldo at this age. ठीक है, तो he saw that okay, maybe we'll start that way and then maybe Ronaldo comes on and adds to that impact, because I don't expect Ronaldo to do that for 90 minutes. So I rather get him on. वही लगता है. लेकिन हाँ, the fact that वो clap कर रहे थे, and I think he was purely applauding Sancho का जो the ability to find that goal, simply put. और I know लोग काफी रीड करेंगे इसमें, लेकिन कल भी यार वो जेमी कैरेगर से हाथ नहीं मिला है, तो आई एम गेसिंग दैट हिज हार्ट इज स्टिल इन मैनचेस्टर यूनाइटेड, वेरी मच सो. तो वो डिनाई नहीं करूंगा. डेफिनेटली कैरेगर भी तो ऑन स्क्रीन उसको साफ बोले थे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज नॉट द गोट. जिमी कैरेगर ओपनली बात बोले थे, और फिर उधर से अब पता नहीं कि अब वो क्रिस्टियानो देखता है वो क्या बोल रहा है, मुझे नहीं पता. मस्ट हैव सीन अ क्लिप फ्रॉम समवेयर, और फिर मुझे हो सकता है उसके एंटोराज ने बोला होगा, भाई देख तेरे बारे में जेमी ने ये बोला, भाई देख उससे हाथ मत मिलाइए. कमेंट कर. वो जाता है तो वो जाता है, दोनों साथ में जाता है. मतलब दैट वाज अ फनी वन. सो अल्टीमेटली अंकित सर, व्हाट डू यू थिंक? या नहीं, वो रहेगा, मतलब इनफैक्ट मतलब अभी कोई चांस नहीं. द फैक्ट दैट वो कैसेमीरो अभी आ गया है ना, आप देखिए. यस, कैसेमीरो इन टर्म्स ऑफ बेसिकली एबिलिटी टू फाइंड रोनाल्डो, ही इज नॉट द एब्सोल्युटली बेस्ट इन द वर्ल्ड, लेकिन काफी अंडररेटेड भी है उस सेंस में, बिकॉज ही इज समवन जो इतना एक्सपीरियंस है, ही कैन काइंड ऑफ मेक थिंग्स वर्क फ्रॉम मिडफील्ड. वो एक मतलब इतना गैप नहीं दिखेगा बिटवीन द फॉरवर्ड लाइन एंड डिफेंस. आई रियली फील सो, बिकॉज कैसेमीरो विल बी दैट एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन जो चाहिए था.
Exactly, and that will allow Eriksen and Eriksen, Bruno to play better. And मैं तो बिल्कुल भाई फ्रेड, हमेशा मैं फ्रेड का ही नाम लेता हूँ, मुझे लगता है फ्रेड अच्छा खेलने वाला है इस कैसेमेरो के बाद, वो ब्राजील वाली Yeah. मिड आने वाली है वापस से। तो सिद्धांशु वाली आपके कमेंट के बारे में बात कर लिया, विल जस्ट टेक द ओपिनियन ऑफ अधिदेव सर। अधिदेव सर, अबाउट दिस क्रिस्टियानो वाला इशू, व्हाट डू यू थिंक? अरे क्रिस्टियानो, आई थिंक ही विल लीव, ठीक है। आई थिंक I'm just deducing this from the reaction that he had yesterday, that he was an 80th minute substitute, ठीक है। 81, तो उसके पहले मार्शियल, आपने अगर बहुत सही से न्यूट्रली भी अगर आप उसका रिएक्शन देखोगे ना, ही वाज स्टोन कोल्ड, मतलब ही वाज स्टोन कोल्ड ऑन द बेंच, ठीक है, एब्सोल्युटली स्टोन कोल्ड। एंड जब आया भी, अंदर भी आया, इट वाज, मुझे ऐसी बात भाई कि आई थिंक ही इज गोइंग टू लीव वेरी सून, एंड आई थिंक ही इज डाउन द पेकिंग ऑर्डर फॉर टेन हैग, ठीक है। ही अंडरस्टैंड्स दैट एंड ही वांट्स टू लीव, बट द पॉइंट इज, अगर कहीं जाएगा भी, ठीक है, तो कहाँ जाएगा, मतलब कौन उसको That's the अफोर्ड biggest कर question. पाएगा? दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन, कहाँ जाएगा? आप देख रहे हो उसका एजेंट उसको लिटरली होल्ड कर रहा है सब बड़े बड़े क्लब्स में, पर कोई बड़ा क्लब अभी करंटली उसके वेजेस को अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। दो, आई अंडरस्टैंड इट्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बट ऑल्सो एक पोजिशनल नीड भी तो होती है ना यार हर क्लब में, Yeah. कि भाई वो पोजीशन में हमको, हमारी नीड है कि नहीं, कि हम स्ट्राइकर इतने बड़े, चाहिए। हाँ, हम इतने बड़े बक स्पेंड करें, वेजेस देंगे क्रिस्टियानो को, ये सब हम प्रॉपर इतने बड़े बक स्पेंड करें, यूनाइटेड के लिए हम देंगे, ट्रांसफर फी भी देंगे, तो इतने बड़े बक स्पेंड करने के लिए है भी क्या हमारे पास, कि मतलब पैसे वैसे हम इतने स्पेंड करें क्या? So exactly, everyone's saying Chelsea, 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 but Ronaldo doesn't solve our problems, and we'll get to that later on. I think if this conversation transitions into the Leeds wala match, but yeah, that was Yeah. my answer. ऑलराइट, ग्रेट। यहाँ पे कुछ पॉइंटर्स हमें आए थे अबाउट द एफएफपी वाला रूल, आई जस्ट पुट देम इन फॉर द पीपल। Question regarding FFP. FFP is calculated on the basis of the years. Chelsea spent 200 million plus under Lampard, and if they go big now, wouldn't that be similar? यार ये प्रीमियर लीग के क्लब्स एफएफपी से बहुत दूर होते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता, प्रीमियर लीग में बहुत लीनिएंट है एफएफपी। अरे ये हम जो लोग को बाहर बैन के, मिला था यार, आई नो डिफरेंट रीजन, लेकिन या काइंड ऑफ इनडायरेक्टली रिलेटेड। यहाँ पे क्विकली बोलना चाहूंगा, यस वी स्पेंड सो मच, बट रिमेंबर भाई, वी गॉट क्रेजी अमाउंट ऑफ मनी बैक फॉर मोराटा, तो देयर वर अ लॉट ऑफ अदर सेल्स, वी हैड लाइक ऑलमोस्ट 40 प्लस प्लेयर्स ऑन द बुक्स, हमने Eden काफी, आई Hazard थिंक का भी आया ना, पालासिच, Eden Hazard हजार का भी आया ना एग्जैक्टली, हमारे पास मतलब पैसा। तो सब मिला के इफ यू एक्चुअली सी ना, मानव हमने बैलेंस कर लिया अपने बुक को, तो प्लस द फैक्ट दैट रोमन अब्रामोविच जब गए तो द लोन जो भी है जब चुकता हो गया है, एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम जीरो, तो पहले का ऑलरेडी इट वाज बैलेंस्ड, एंड प्लस नाउ अभी भी आप देखो तो इवन इफ वी स्पेंड मच, द फैक्ट इज वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम जीरो, तो दैट इज व्हाई टॉड Zero. बर्ली इज विलिंग टू स्पेंड। and एक और चीज है यहाँ पे, पीपल हैव बीन टॉकिंग अबाउट पीएसजी एज वेल, बट मुझे लगता है ना कि सिटी को अगर असाइड रखा जाए तो पीएसजी इन द पास्ट फ्यू इयर्स हैव डन अ इनक्रेडिबल बिजनेस। मैं पीएसजी का एक वीडियो बना था जहां पे आई रिसर्च अबाउट द नेट स्पेंड इन द लास्ट 5 6 7 इयर्स। तो आई ऑलवेज सॉ कि मतलब हर 2 साल के बाद से ना वो अपने स्क्वाड को ऐसे चेंज करते हैं, प्लेयर्स को सेल करते हैं, नए प्लेयर्स साइन करते हैं, दैट अल्टीमेटली बैलेंसेस देयर बुक्स, और नेट स्पेंड उनका ना बहुत ज्यादा ऐसे 60 70 से ऊपर नहीं जाता है। आप अगर उनके पिछले 7 8 साल के ना स्पेंडिंग देखिएगा, फ्रॉम ऑल ऑफ द प्लेयर्स दैट दे हैव साइंड एंड सोल्ड, they have managed to sell them at decent price and they have yes spent, but उनके स्पेंडिंग में 2 ही प्लेयर थे जो कि आउट ऑफ द एकदम ब्लू और भयंकर पैसों के साथ, नेमार और किलियन एम्बापे। Otherwise, the other players that they have signed have still been at decent amount of like 50 60 40 वाले players रहे हैं, and you see the players that they have sold, वो almost ना एकदम नेट स्पेंड उनका मिनिमल बनाते हैं। तो ये एफएफपी उधर भी कैसे वैलिड होता है मुझे नहीं पता। अब इंटर मिलान इवन आफ्टर सेलिंग लुकाकू, सेलिंग हकीमी, हाँ, प्लेयर्स को their problem still persists, या इसलिए तो स्टिल वो परसिस्टेंट मिलान स्क्रिनियार के पीछे, स्क्रिनियार मतलब इतना पीछे थे कि भाई मिलान स्क्रिनियार को बेचेंगे उसको बेचेंगे बेचते बेचेंगे, हैं। बट आई 50 डोंट मिलियन थिंक में सो। तभी एग्री नहीं कर रहे थे जी। आदिदेव सर आप म्यूट हो शायद। सॉरी, हाँ कोई अग्री नहीं कर रहा था, इसलिए आई थिंक दे हैव डिसाइडेड टू रिन्यू हिज कॉन्ट्रैक्ट, बट आई थिंक दे विल स्टिल पुश अ प्लेयर आउट ऑफ their team in this transfer window for that amount of money. They are still in some trouble regarding their finances, जितना मैंने पढ़ा है।
I think it's also about the loans, right? Because you loan a certain amount of players. For example, clubs like PSG, Chelsea, they either get people on loan or send people on loan. So I think that also counts on the wages that your club is हाँ offering or basically getting. So that kind of helps in balancing the situation. Lukaku वाले में हम I still haven't read a proper report how many wages, what is the share of wages we are giving and what is the हाँ share of wages Inter is हाँ, हम giving भी for that deal. जी, वहाँ तो गुड रिडेंस वाला चीज था, सच में बोलो वो अरे हम अभी लोग ही तक देते थे। लिटरली भाई मैंने लिटरली कोई भी रिपोर्ट नहीं पढ़ी है प्रॉपर कि हमारी तरफ से हम कितने वेजेस दे रहे हैं डूड. इट्स सच अ हाँ सीक्रेटिव डील इन दैट एस्पेक्ट. आई हैव मतलब इट्स टेरिबल. इट्स टेरिबल ब्रो. मतलब क्योंकि इट्स सच अ ह्यूज डील एंड वी स्टिल डोंट नो कि कौन सी पार्टी कितना वेज दे रही है वो डील के लिए. समझ रहा है? इट्स जस्ट अमेजिंग. three we'll be cases ना, finding all मतलब out. Lukaku, Werner and now potentially Ziyech we bought and selling back to the same club. Imagine. Yeah. That is Chelsea And scouting. Werner scoring in his first game only, bro. Yeah, Crazy. Yeah. yeah, Crazy. yeah. और फिर अगला And गेम हार Lukaku जाते हैं scoring with आके. his first touch, bro. Crazy. Yes. और Ziyech वापस जाएगा Ajax पे, he also scored probably. He will also क्या score. है? Arey, we are such a club, bro. I'm very expectant of Ziyech leaving the club and then scoring attacks. I expect this to happen. भाई ये imminent possibility है. This is going to happen. बट इसके बारे में बात But करेंगे. पहले लीड्स के बारे में बात कर ले. अगर अगर definitely, अगर जी definitely. भाई की अनुमति है तो. नहीं, अरे कोई अनुमति की नहीं बात है भाई. यहाँ पे we were definitely gonna come back on that game. यहाँ पे we have to talk about Chelsea. तो वो गेम काफी एक weird गेम हमने देखा यहाँ पे. लीड्स और चेल्सी का 13 किलोमीटर एक्स्ट्रा भागे जहां तक रिपोर्ट्स हैं. लीड्स मोर देन चेल्सी, राइट? एंड दैट वाज द पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस ऑफ चुकिल कि भाई यार वो नथिंग वेंट रॉन्ग, कोई भी गलती नहीं हुई, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं था. दे जस्ट रन मोर देन. नहीं, Tuchel is saying we were the better team. मतलब I agree in the first 7 minutes. बस 7 मिनट के लिए बढ़िया खेला भाई. I was so surprised भाई. सही में भाई अंकित भाई मैं तो पागल हो गया. क्या बोल रहा है टुकल? What is he saying? मल्टीवर्स उसको बोलते हैं, मल्टीवर्स भाई. प्रॉपर मैं अलग ही लेवल में चल रहा है पैरेलल. आई डोंट नो व्हाट. मतलब मैं खुद मैं देख रहा था 7 to 8 मिनट काफी तो प्रॉपर वही राइवलरी वाली मैच थी. फाइट चल रहा था, 50-50 चैलेंजेस और रीस जेम्स भाई दिखा रहा था अपना स्ट्रेंथ. लेकिन मैं बोलूं द मोमेंट एक्चुअली गया. सब लोग बोलेंगे मेंडी. आई थिंक वो मोमेंट था कुलीबाली गेटिंग द फर्स्ट येलो कार्ड. Aronson, I think, was the guy जो forced Koulibaly into that turn और Koulibaly का ego घुस गया. Brendan Aronson. What brilliant. मैं तो यार बोल रहा हूँ this guy, मतलब भाई FPL में सब लोग अभी बोल रहा हूँ not too late, ले लो इसको, ये बंदा अच्छा करेगा. लेकिन मैं बोल रहा हूँ वो टर्न ना Koulibaly ऑलमोस्ट वो इगोइस्टिक हो गया उस मोमेंट में. और ही इज लाइक ये कैसे जा सकता है बंदा, और उसको पुल कर लिया. उस समय से थियागो सिल्वा कुलिबाली के बीच में देयर वाज सम प्रॉब्लम. आई थिंक एक बार रीस जेम्स और थियागो सिल्वा के बीच में कुछ आर्गुमेंट हुआ. तो दोस आर मोमेंट्स व्हिच लेड अप टू दैट मेंडी मिस्टेक. To be very honest, not that I'm defending Mendy, definitely Mendy यार जो किया that mistake यार, overplaying when you know that you're not good with the ball, when you know that Leeds are pressing you to death, आप क्यों वो ट्राई कर रहे हो भाई, मुझे आइडिया भी नहीं है. तो आई थिंक इट्स मोर अबाउट स्विचिंग ऑफ द मोमेंट. हमारे जब लीडर्स जैसे Koulibaly and Mendy made those major mistakes, बाकी टीम switch off हो गई almost, which is problem is the mentality. But I think Mendy point पे, I'll let you continue also Ankit bhai, but just giving a reply on that Mendy point, I think Mendy was expecting the two centre backs to split him on the sides outside the D box. Probably. so that he gets a channel to pass to them. Usually that would happen. Would have happened with any other top team. Okay, if a Man City does it, Man City would have done that, a Barcelona would have done that, okay, Bayern Munich would have done that. Usually that would happen at top team. He's expecting passing lanes to open right at the side of the box. Koulibaly to come in, or a Reece James to come in on the right, and a Koulibaly to come in on the left, or a Cucurella to be available on the left. What happened was all of our defenders became static. All of our defenders are watching the danger that is being applied on Mendy. Brendan Aronson was like a bhai, मतलब dog with a bone type scene था उसका. बिल्कुल. मतलब वही बॉल वॉचिंग में हम इतने गुम हो गए. तो इसलिए मुझे भी स्टार्टिंग लगा कि भाई ये मेंडी की गलती है. बट बाद में मैंने सोचा कि यार टुकल एक तो बोलता है कि तुम बैक से बिल्ड करो, ठीक है, बार बोलता है बैक से बिल्ड करो. दिस हैज बीन इंस्टिल्ड इनटू द कीपर एज वेल. सो इफ वी वांट टू बिल्ड फ्रॉम द बैक, then provide the keeper with the options also, no, when he's under pressure.
The keeper doesn't have any options when he's under pressure. लेकिन गुरुजी वहीं तो मैं बोल रहा हूँ, देखो कूलीबाली इससे प्रॉब्लम है क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ही गॉट ए येलो कार्ड, ठीक है. सेकेंडली द मोमेंट वो हुआ उसको पता है दैट डेंजर स्टिल परसिस्ट, इनफैक्ट इवन मोर, क्योंकि वो टारगेट बन गया. तो ही वाज स्टिकिंग, ट्राइंग टू स्टिक ऑन टू एरनसन मच, बिकॉज ऑफ विच वो ही वाज नॉट क्रिएटिंग स्पेस टू गेट द पास. और आप देखो एक मोमेंट आया था और मेंडी ने जस्ट बिफोर द मिस्टेक ही एक्चुअली पास इट टू कूलीबाली इंस्टेड ऑफ काइंड ऑफ टेकिंग दैट फर्स्ट टच एंड पासिंग, पहला टच से लेफ्ट फुटर में ही ट्राइड अ स्ट्रेट डायगोनल काइंड ऑफ अ थ्रू पास ऊपर से. तो वहां क्या हुआ, एंड यू राइट, टूकल गाली दिया भाई कूलीबाली को, चिल्लाया भाई क्यों किया वो. तो कूलीबाली वाज लाइक दिस गाय इज कमिंग टू मी, व्हाट शुड आई डू. दैट वाज द रिप्लाई इफ यू एक्चुअली केयरफुली सी. तो यू हैव अ सर्टेन पॉइंट, लेकिन वही है मेंडी को भी यार पता रहना चाहिए कि दोस आर प्रॉब्लम्स, लाइक ही शुड बी स्मार्ट इनफ टू नोइंग दैट देयर शुड बी अ प्रॉब्लम. व्हाई डू यू ओवरप्ले? आई थिंक टिल द टाइम हाँ बोलो. I just wanted to ask this यार, देखिए मैंने पूरा गेम चेल्सी का नहीं देखा, इसलिए I'm majorly letting you guys talk about it, and मैं यहाँ पे understand and learn करने की कोशिश कर रहा हूँ. मिडफील्ड की पिवट पेयरिंग थी, अभी यहाँ पे मैं स्क्रीन पे दिखा रहा था. चेक द लाइनअप उस टाइम पॉइंट ऑफ टाइम पे दे प्लेड विद जॉर्जिनो, गैलेगर, माउंट. आई डोंट थिंक सो कि सेटअप एग्जैक्टली यही रहा होगा. आई थिंक कि माउंट थोड़ा और ऊपर रहे होंगे, एंड गैलेगर बताता हूँ. थोड़ा सा इसके बारे में जस्ट ये जो सेटअप था, माउंट ऊपर थे, ठीक है, बट बिल्डअप में माउंट पीछे आ रहे थे बिकॉज टॉटनहम ने क्या किया था कि अपने शेप से उन्होंने हमको मैन टू मैन प्रेस कर दिया था, ठीक है, अपने शेप से. सो टू ओवरलोड द मिडफील्ड, टू ओवरलोड द मिडफील्ड, व्हाट टुकेल डिड वाज ही विथड्रू माउंट अ बिट, ठीक है, ताकि तो बट जब उन्होंने विड्रॉ किया माउंट को, सी नहीं हुआ. रहीम स्टर्लिंग वाज प्लेइंग, सो व्हेन ही विथड्रू माउंट, तो क्रिस्टियन रोमेरो व्हेन यू विथड्रू माउंट, तो क्या बोलते हैं कि ये जो आपके रॉबर्ट कॉक जो है ना, ठीक है, ही वाज कीपिंग टैब्स ऑन माउंट थ्रू आउट द गेम, ठीक है. तो आई थिंक that played into the hands of Leeds United as well. Also Pascal Struijk, bro, great game. I think Ankit bhai bhi बोलेंगे Pascal Struijk. He's not a core left back, Guruji. That's the worst part. He's not a core hardcore left back नहीं है वो. और मैं क्यों बोलूंगा अगेन, रूबन लॉफ्टस-चीक वही, मतलब आई थिंक दिस हैपेंस एवरी सीजन गुरुजी, और मैं इतना बात कर चुके भाई. लॉफ्टस-चीक एज मच एज ब्रिलियंट था अगेंस्ट स्पर्स, आप देखिए अगेंस्ट लीड्स यूनाइटेड व्हिच प्रेसेस दैट मच, that is a suicidal attempt to play him there. अगर आप खेल भी रहे हो ना, मैं again in my preview I had clearly said भाई लॉफ्टस-चीक को खिलाना चाहिए, he did so well, but play him in midfield. He can be that midfield extra man जो जॉर्जिनो को चाहिए with Gallagher. Again Gallagher, coming back to the same point, I think जो गुरुजी ने बोला about Mount, Gallagher could have been that free man because of that. लेकिन Gallagher according to me is not a guy जो कि वो नंबर 6 में खेलेगा. He's not a guy जो कि पहला पास करेगा. ये चीज हमने क्रिस्टल पैलेस पे काफी बार देखी थी. He was much more operating in the final thirds. और अगर मैं इमेजिन करूं कि यहाँ पे जो भाई कह रहे हैं हमारे प्रियांश भाई कि ये क्रिस्टल पैलेस को करेंटली मैं अभी गैलेगर डाल दूं उनकी टीम में, तो man that could really blow up. Gallagher needs a person who's playing alongside him in a double pivot who is very defensively sound. Now Jorginho is not a person who's defensively sound. He is now that I'm not trying to imply कि भाई वो बुरे प्लेयर है. जॉर्जिनियो के पास एक अलग क्वालिटी है कि वो बॉल को हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो मतलब पोजेशन को रिसाइकल कर सकते हैं, ठीक है, उसमें वो बहुत अच्छे हैं. जॉर्जिनियो इज वेरी गुड इन रिसाइकलिंग पोजेशन ऑफ द बॉल, ठीक है, वो उसमें बहुत अच्छे हैं. बॉल रिकवरीज ही इज वेरी बैड एट इट. मतलब जॉर्जिनियो की बॉल रिकवरीज, मतलब कल तो मतलब ही हैड अ हॉरिबल गेम, ठीक है. जॉर्जिनियो वाज एब्सोल्युटली Kante helps in that aspect of the game, and Jorginho helps cover the lines. You need a Kante वाला aspect with Gallagher, ठीक है, बिकॉज आप गैलेगर के ऊपर ही पूरी की पूरी डिफेंसिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं डाल सकते, जो शायद फर्स्ट हाफ में बहुत डल रही थी, एंड दैट इज व्हाट लीड्स टू एडवांटेज ऑफ, ठीक है, क्योंकि हमारी बैकलाइन और मिडफील्ड के बीच में बहुत स्पेस था, ठीक है, बहुत ज्यादा स्पेस था. हम कोऑर्डिनेशन में ही नहीं बैठ पा रहे थे, हमको एक बस की तरह आगे मूव करना था, बट the spaces that we left between our defense and midfield was huge, and that is कौन ड्रॉप कर रहा था गुरुजी यहाँ पे? जॉर्जिनो was dropping to receive the passes, or was it Gallagher? कौन बंदा था जो मिडफील्ड से इनिशिएट कर रहा था? Gallagher was first half में Gallagher was dropping a lot. Gallagher was dropping a lot, and Jorginho was on the other side of the pitch. But again, spacing की बात आ जाती है. The space between Gallagher and Jorginho was huge. And in some, like during a lot of phases of play, it was huge, and that is where Leeds dropped their players inside,
ठीक है, कि भाई उधर तुम बॉल रिसीव करो, टर्न, बिकॉज देयर इज नोबडी टू क्लोज यू डाउन, द सेंटर बैक्स आर बिहाइंड आराम से, ठीक है, देयर इज नोबडी टू क्लोज यू डाउन, रन विद द बॉल। इसका फायदा बहुत अच्छे से लिया जैक हैरिसन और जो इनके वाइड है, जो जैक हैरिसन है और कौन से थे, डैन जेम्स। डैन जेम्स, इन्होंने बहुत अच्छे से फायदा लिया, बिकॉज दीज टू आर ग्रेट, हैव ग्रेट पेस ऑन द विंग्स, ठीक है, पेस बहुत ज्यादा है। आप यूनाइटेड वाले ही ले लो, एलांगा और सैंचो, ठीक है, एलांगा सैंचो, एलांगा या रैशवर्ड सैंचो, बोथ हैव ग्रेट पेस, ठीक है, once you give them a lot of space to run onto, they will be a small danger to you, and that's what happened with this particular team as well, because behind there was a lot of space. Mark Cucurella was caught up a lot of times samne. Ruben Loftus-Cheek was caught up a lot of times samne, because Ruben Loftus-Cheek, I'll tell you, is an inverted wing back right now in Tuchel's system. ठीक है, आप रीस जेम्स को बोलते हो कि तू वाइड जा, ठीक है, और रूबन लॉफ्टस-चीक को बोलते हैं इन्वर्ट कर, और इधर इस मैच में बोथ ऑफ देम वर कॉट आउट इन दैट फ्लैंक मोर ऑफन देन नॉट। तो आप जैक हैरिसन और डैन जेम्स को अगर बोल रहे हो कि तुम लोग भागो ग्रीन्स में, तो भाई वो लोग तो दे विल डेफिनेटली गिव एवरीथिंग दैट दे हैव, and then you have a Rodrigo in the middle, and you have a Brendan Aronson in the middle, who are great at counter pressing teams, ठीक है, because उनके पास बहुत ज्यादा एनर्जी है, हाँ उनके पास एनर्जी है और लेग्स हैं, ठीक है, इसलिए रॉड्रिगो इज अ बेटर शाउट देन पैट्रिक बैमफोर्ड राइट नाउ, ठीक है, कंसिडरिंग जैसी मैच का 4-2-2-2 वाला जो शेप है, ठीक है, तो इसीलिए आई थिंक दिस वाज brilliant, this was brilliantly executed by Leeds against us, and I think we deserved it, to be honest. एक लास्ट पे मैं ऐड करना चाहूंगा उसमें क्विकली जी भाई, लाइक देखो मतलब एक और पॉइंट मैंने काफी बार बताया यार, व्हेन वी आर प्लेइंग विंग बैक सिस्टम, यू नो, फर्स्ट ऑफ ऑल लॉफ्टस-चीक के बारे में वी हैव स्पोकन इनफ, एंड दैट्स राइट, हर ओनली आउटलेट right now is Reece James, और that becomes a huge issue. ऑपोजिशन टीम्स को पता है भाई रीस जेम्स ही है, और वो पहले क्या डिफरेंट होता था, पहले वी यूज्ड टू हैव चिलवेल एंड रीस जेम्स। कुकुरेला इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, यस, हाई मनी बिग मनी साइनिंग, वो खेलेगा, काफी एनर्जी है, बंदा बहुत अच्छा लगता है मुझे, लेकिन व्हेन इट कम्स टू एक्चुअली बीइंग सो डिपेंडिंग ऑन विंग बैक्स टू स्कोर यू द गोल्स और क्रिएटिंग योर चांसेस, आई डोंट थिंक कुकुरेला इज द एग्जैक्ट गाय फॉर दैट। आई थिंक विंग बैक सिस्टम हम कंटिन्यू करते हैं, आई रियली जेन्युइनली बिलीव दैट इट शुड बी Chilwell who should start, who should be given a run of games, who should get back what he used to do against Juventus। भाई सबको पता है लास्ट सीजन हम जो उस मैच में कर रहे थे, आई नो ही गॉट इंजर्ड इन दैट वेरी गेम इफ आई रिमेंबर राइट, लेकिन बिफोर दैट मोमेंट जो कर रहे थे, आई थिंक दैट इज एग्जैक्टली what Tuchel wants. I think Chilwell is better in that aspect only, and अगर हम wing back करते हैं, नहीं तो we can continue with what Cucurella does, अगर हम खेलते Reece James as more like a full back. राइट, मुझे लगता है कि आगे आने वाले गेम्स और हमें क्लैरिटी मिलेगी कि अप्रोच क्या है यहाँ पे टुकल का। ही रियली नीड्स टू सॉर्ट द मिडफील्ड। कोवाचेक आउट है, बहुत बड़ा मिस है अभी तो। आई थिंक कोवाचेक इन द मिडफील्ड इन प्लेस ऑफ गैलेगर वुड हैव सॉल्व्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, बिकॉज़ प्रेस रेजिस्टेंस बंदा है वो, ही कैन कैरी द बॉल, रन द बॉल एंड स्प्लिट द डिफेंस विद हिज कैरीज एंड पासिंग एबिलिटीज। तो वी विल वेट एंड सी कि हाउ विल सी प्रोग्रेस इन द सीजन। आई थिंक डाउट करने की जरूरत नहीं है, स्टिल विल पिक देम फॉर फिनिशिंग इन द टॉप 4। टाइटल चार्ज तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे नहीं अज्यूम करूंगा, आई डोंट थिंक सो कि अंकित भाई और अदिदेव भाई भी ये बात जूम करेंगे। टाइटल चार्ज तो मुश्किल, चलो ऐसे प्यार से सर हिला रहे दोनों। ड्रीम वर्ल्ड में बस। और एक एडेड जस्ट छोटा पॉइंट, आई नो वी हैव टेकन अ लॉट ऑफ टाइम ऑन दिस गेम, बट एज इज चेल्सी आई थिंक थोड़ा सा मतलब दिल से बातें आ रही है बाहर। बट मैं ये बोलना चाहूंगा कि नाउ देयर वर सम पीपल ऑन ट्विटर हु वर टेलिंग मी काय हावर्ट्स के साथ, काय हावर्ट्स के ऊपर क्रिटिसिज्म इज अनवारंटेड। मैंने बोला नो इट इजंट, बिकॉज हाँ नो इट इजंट, क्योंकि मैंने बोला कि अभी वो 2019 से है हमारे साथ, ठीक है, 2019 हाँ 2019 से, हाँ 1920 में आया था, 20 में आई थिंक 2019-20 से है ना, करेक्ट 1920 सीजन है आई थिंक, हाँ 1920 से बता आया सकते था, हैं लोग हमें। हाँ 2019-20 anyway he's played around 60 games for us, ठीक है, he's played around 59 to 60 games for us right now, ठीक है। तो उसमें we still don't know what is his natural position, to be very honest, ठीक है। हमने उसको राइट पे प्ले मेकर पे खिलाया, ठीक है, राइट पे हमने उसको प्ले मेकर पे खिलाया, हमने उसको स्ट्राइकर खिलाया, हमने उसको विड्रॉन स्ट्राइकर भी खिलाया, सेंटर में आ जा तू, ठीक है, हमने उसको विड्रॉन भी खिलाया, नंबर 10 भी खिलाया उसको, ठीक है, ऑल्दो नॉट फॉर लेफ्ट विंग भी खिलाया, ठीक है, कहीं तो पता चले कि ही इज क्लिकिंग, ही इज बीटिंग डिफेंडर्स, ठीक है। वी नीड पीपल टू बीट डिफेंडर्स राइट नाउ,
to be in the top 4 because Yeah. most of the top 4 teams have players in that attacking 3 who can beat defenders. We don't exactly have players in our attacking 3 who can beat defenders. ठीक है, we 1v1 पे need a बहुत स्ट्रांग नहीं है. I exactly think a few players है पुलिस को include करके, but वो तो bench पे रहता है बंदा बेचारा. हाँ, yes, continue. exactly. तो आप अभी अगर मैं देख रहा हूँ कि if he has अगर आप इंजरी प्रॉब्लम्स को ले लो, कोरोना को ले लो, ठीक है, फाइन, अग्रीड, ही हैज हैड दैट, बट ग्लिम्सेस तो मिले कि ही इज एक्चुअली गेटिंग इनटू दैट पर्टिकुलर जोन. एक चैंपियंस लीग गोल, फाइनल गोल, फाइन, ग्रेट प्लेयर, ही विल बी डेफिनेटली, उसका नाम तो हिस्ट्री बुक में लिखा ही रहेगा बिकॉज चैंपियंस लीग फाइनल गोल स्कोरर काई हावर्ट्स लिखा तो रहेगा, ठीक है. बट इफ यू कम डाउन टू ब्रास टैक्स एंड टेल योरसेल्फ दैट ब्रो वी पेड सो मच मनी फॉर हिम, ठीक है, ही इज प्लेइंग एज आवर प्राइमरी स्ट्राइकर, ठीक है, प्राइमरी स्ट्राइकर आउटलेट, ठीक है, आर वी इवन गेटिंग हाफ ऑफ इट बैक, ठीक है. I'm not saying that is the player's responsibility. Please don't get me wrong. I'm not saying that's the player's responsibility. But after 2 seasons, okay, I think he's played 2 seasons. After 60 games, okay, he's bedded in well. I think 60 games is उसको बोल सकते हो कि भाई ठीक है, he's bedded in well with the team. आ गया, जेल थोड़ा हो गया टीम के साथ. At least he starts to repay that particular fee. Unsaid responsibility आ जाती है किसी के. Adidev sir, what do you think should be the payment in terms of output of this lad? After having paid so much, क्या करे possibly इस point of time पे Kai Havertz to fulfill his needs, given that he's not a goal scoring natural goal scorer to bring in 20 goals. जब मैंने उसको लेवरक्यूसन में देखा था ना, लेवरक्यूसन में he was definitely a creative outlet as well, and he used to get into very good positions to finish chances, ठीक है, he used to get into very good positions to finish chances. He used to exploit channels a bit well on he used to exploit those right channels really well. Adidev sir, sorry to stop you there. जितना मैंने लेवरकुसन में उसको ऑपरेट करते देखा है, I always found कि he always had plenty of space in front of him to run. Correct. Always, क्योंकि आप चेल्सी का गेम देखिए, हमेशा it is played in the opposition box because Chelsea pin कर देती है opposition box and there is not a lot of space to operate. And वहाँ पे but we have faced a lot of teams when we have always been on the counter, ठीक है, we have been on the counter more often than not. अगर आप अंकित भाई भी, I think he will support me on this, most of our goals, I think 40 to 50% of our goals sometimes have come from us being on the counter, and sometimes वो mid block becomes a low block of our opposition, and फिर हम horizontal passing करने लगते हैं because we haven't exactly affected that counter really well, ठीक है, हमने वो एग्जीक्यूट नहीं किया वो काउंटर को रियली वेल. तो उसी काउंटर में काय हावर्ट्स भी बहुत बार आए हैं, ठीक है, काय हावर्ट्स भी बहुत बार इन्वॉल्व हुए, टीमो वर्नर बहुत बार इन्वॉल्व हुए, मेसन माउंट बहुत बार इन्वॉल्व हुए. एक और चीज है अधिदेव सर यहाँ पे, I don't think so he has got the perfect outlet for him to pass on a counter because वही मैं आ रहा था यार, जी भाई players उसके साथ खेल रहे हैं. वही बोलो जी भाई, देखो आप देखो, गुरुजी इज सेइंग राइट इन टर्म्स ऑफ बेसिकली जो गेम्स है ना, द बिगर गेम्स, और यू सी अ लॉट ऑफ बिगर गेम्स ही हैज फेयरली डन बेटर इफ यू एक्चुअली कंपेयर टू वर्सेस मिड टेबल टीम्स, बिकॉज़ वहां पर यू आर बेसिकली एक है एलिमेंट जहां पर ही इज दैट मेन गाय इन द सेंटर, और टुकल बोला भाई यू आर द मेन गाय. आप देखो एग्जांपल ले सकता हूं, रियल मैड्रिड, the season we won the Champions League, he was by Sergio Ramos at that time wasn't too bad, or what he did Sergio Ramos, everyone remembers that. Liverpool last season first game, wow, what a match he had. Yes, he was a goal scorer as well, but generally भी बहुत अच्छा मैच था despite us being 10 men down, right? तो वही है, when you actually given that responsibility of being that main man, problem अभी क्या हो रही है ना, he's not having that kind of role at all. अभी इतना ज्यादा floating system चल रहा है ना, that even I think that even he's not sure. Sterling को use नहीं कर पा रहे हम. Sterling का best position क्या है? He should be running the channels. He should be running as a defenders. तो Havertz centrally भाई. He's now being used centrally. A guy like Sterling is being used centrally. मतलब I can't even fathom this. मैं तो सोच रहा था कि Sterling को wide रखेंगे, but it is so devastating. But on the other hand, also I feel for Havertz a bit as well, and I feel for Sterling also a bit as well, because they are not getting the service that they should be getting inside the box. Okay, and the only outlet that we have are wide positions, and we are also being found out in those wide positions because सब बोल रहे हैं कि भाई क्रॉस आ रहा है, तुम कॉम्पैक्ट रखो, अंदर बॉक्स के अंदर सबको कॉम्पैक्ट रखो, मस्त से क्रॉस आएगा, ठीक है, मस्त से क्लियर करो बॉल को, that is how we'll defend against Chelsea.
and अरे एक that's रील आ exactly गया what's है happening गुरुजी, against आप City. जी भाई, आई डोंट नो इफ यू सॉ दैट, एक रील आया है. तो व्हाट हैपेंड इज few seasons back we had exactly the same situation. If I'm not wrong, it was Hazard picking the ball in midfield, or by the way it was Fabregas at the end of things, और वहां पर एक diagonal pass inward आया था. exactly same चीज हुआ था the weekend, exactly same spot पे, but Mount decided to go wider because that is how we go wide. वही एक पैटर्न बन गया, वाइड से क्रॉस करते हो भाई. Havertz is not your header, he's not going to do that No, for you. he's not. Yeah, exactly. ठीक है. We have talked a lot about both of these games. यहाँ पे लोग थोड़े से ड्रिफ्ट अपार्ट हो रहे हैं. अब गाइस देखिए, ऐसा कभी होता नहीं है कि हम बड़े इन डेप्थ में किसी मैचेस के एनालिसिस करें, ठीक है. तो इट्स वेरी गुड टू हैव यहाँ पे आदिदेव सर एंड अंकित सर ओवर हियर टू टॉक अबाउट वन पर्टिकुलर गेम इन सो मच डेप्थ. यहाँ पे चेल्सी के बारे में कितनी सारी चीजें हैं जो कि वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट राइट नाउ. सो जस्ट थोड़ा सा पेशेंस के साथ आप सुनिए, आपको अच्छा लगेगा. यहाँ पे बाकी आपकी टीम के बारे में भी हम ट्राई करेंगे बात करना. वी आर कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट गेम. यहाँ पे वी आर गोना टॉक अबाउट a bit about this game that was the best Premier League game of the fixture, or some would say not, maybe the second best, because people would say कि भाई Man United game ज़्यादा better था. But come on guys, what are your initial views upon this? मैं तो सो रहा था ये गेम के टाइम पे. पता है मैंने बाद में देखे ये वाला मैच न्यूकासल और सिटी का, but what a game this was. जिस हिसाब से न्यूकासल खेली थी, जिस हिसाब से एलन सेन मैक्सिमम लेफ्ट हैंड साइड से फाड़ रहे थे, and they could have scored more goals. मुझे ऐसा फील हो रहा है. Even City could have scored more goals. हालैंड के पास 2 चांसेस आए, 1v1s में चांस बने हुए. He just निक पोप एक्चुअली गोलकीपिंग काफी तगड़ी की उन्होंने. तो व्हाट्स योर ओपिनियन अपॉन दिस गेम? अंकित सर आपसे स्टार्ट करूंगा. हाउ डू यू लाइक द गेम? या सो ये वाले गेम में एक्चुअली लाइक मैं उस समय लाइव रैंट कर रहा था जब चेल्सी हारी थी, और मैं सोचा चलो भाई गेम तो आने देख भी लेते, साथ साथ में रैंट भी कर लेते हैं, अपना भड़ास निकालना. और फिर मुझे यार समझ में आया नहीं भाई, बाकी टीम्स भी है, इट इज प्रीमियर लीग, कोई भी टीम किसी भी टीम के साथ जीत सकती है. यस वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूकासल जो काफी इन्वेस्टमेंट के साथ आई है, लेकिन आई थिंक इट वाज मोर अबाउट स्टार्टिंग द गेम वेल वाला चीज ना, जो न्यूकासल ने किया. एक होता है दे रियली टुक द गेम टू सिटी, और कितने टीम्स करते हैं. आई थिंक लेसन सीखना चाहिए वेस्ट हैम को. इफ यू रिमेंबर 2 हफ्ते पहले हम बात कर रहे थे जी भाई, बहुत दे पोर वेंट गेम इनटू द था. शेल. बिल्कुल. या और लग नहीं रही वेस्ट हैम है इन प्लेयर्स के साथ में. ये क्या कर रहे हैं जैरेड बोवन को लेके वहां पे पिच पे पीछे घुसे हुए हैं पीछे. बिल्कुल. और उनके पास ज्यादा आई थिंक दे हैव प्रॉब्ली मोर पर्सनल टू डू व्हाट न्यूकासल आर डूइंग. और यहाँ पर सेंट मैक्सिमन, आई थिंक वन गाय जो काइंड ऑफ सरप्राइज मी प्लेजेंटली वाज एल्मिरॉन. इफ यू ऑल रिमेंबर भाई, ग्रिलिश ने एक्चुअली कुछ तो टॉन्ट मारा था भाई लास्ट सीजन अगेंस्ट एल्मिरॉन. सो वो वहां उसको पर बोले थे कि बेंच कर दो, ही प्लेस लाइक एल्मिरॉन. हाँ एग्जैक्टली. सो वहां पर आई थिंक एल्मिरॉन हैड अ पॉइंट टू प्रूव. आप बोल सकते हो ही हैड हिज, मतलब लग रहा था ही इज अप फॉर दिस गेम मोर देन एनीवन. एंड ऑफ कोर्स मिडफील्डर में व्हेन यू हैव अ जोलिंटन, व्हेन ही विंस यू द बॉल, वहां एक फिजिकल एलिमेंट आ जाता है, व्हिच इज व्हाई सेंट मैक्सिमन वाज एबल टू पिक दोस बॉल्स, एल्मिरॉन वाज एबल टू पिक दोस बॉल्स. जो विलॉक वाज रनिंग काइल वॉकर लाइक एनीथिंग यार भाई. जो विलॉक वाज एवरीवेयर. एंड आप देखो, मतलब ही इज नॉट, आप एक्सपेक्ट करो कि ही इज अ गाय जो आप इतना बेसिकली पोजीशन रखेगा बॉल का. लेकिन अगेन काइल वॉकर बीइंग रन ओवर बाय कपल ऑफ प्लेयर्स इन द सेम मैच. वो फर्स्ट हाफ में आई थिंक द इंटरव्यूअर पोस्ट मैच इंटरव्यू में पूछा हाउ डू यू फील अबाउट द मैच, स्पेशली द फर्स्ट हाफ व्हिच वाज हॉरिबल. तो पेप वाज लाइक हॉरिबल, व्हाट इज हॉरिबल मैन, देयर वर 2 टीम्स प्लेइंग, इट्स सिंपल एज दैट. द टीम इन व्हाइट एंड ब्लैक वर प्लेइंग बेटर एंड दे हैड अ पॉइंट टू प्रूव. और वही है, उन्होंने किया पॉइंट प्रूव. But I think overall I have to give more than that the champion mentality that Man City have. They just came back and within minutes, मतलब दिख रहा था the pass that De Bruyne did. I know that we'll come to that, but I have to speak about that. The biggest regret always will remain Chelsea letting De Bruyne go. That pass वो De Bruyne जो किया ना हालैंड के लिए, भाई अलग ही लेवल, seriously. Yes, exactly. And यहाँ पे काफी सारे एक्चुअली हालैंड का गेम भी मैं कहूँगा इट वाज बेटर देन द प्रीवियस गेम दैट ही हैड, जहाँ पे उसके 8 टचेस थे मैच में. तो आई थिंक कि थोड़ा सा धीरे धीरे विद एवरी गेम पासिंग ऑन हालैंड का मैच भी थोड़ा सा सेटल इन हो रहा है. बट देन अगेन टॉकिंग अबाउट न्यूकासल, they have a formidable team, and now अभी यहाँ पे मुझे लगता है कि they have secured another player, Joao Pedro from Watford. I 25 also heard million Everton euros are plus also 5. going for him. साथ साथ में I think नहीं, they might. Everton I हेरवी को हो think गया. final हो गया. Joao final Pedro हो गया, फाइनल हो Joao गया. Yes, अच्छा, and अच्छा. you can just imagine कि what a squad depth they are building. बवाल टीम बना रहे हैं यहाँ पे ये विल्सन, सेन मैक्सिम, एल्मिरॉन, गुमारेस, जोलिंगटन. आई थिंक I'm in love with this guy जोलिंगटन. ये जो इसका शिफ्ट हुआ है ना फ्रॉम अ स्ट्राइकर टू अ बॉक्स टू बॉक्स, एक एडवांस midfielder. नंबर 8
player midfielder where he wins the ball, he runs the ball, he carries it, and he's a scary guy. And काफी सारे लोग यहाँ पे एलन सेन मैक्सिमन को कहेंगे कि yes, obviously we know he's a beautiful footballer to play. Output में थोड़ा हमेशा कमी रहती है, decision making in the final third, but then he's a beautiful footballer, pure elegance है ये बंदा सेन मैक्सिमन. But I think मुझे यहाँ पे जोलिंगटन का परफॉर्मेंस इन दैट मिडिल ऑफ द पार्ट विद ब्रूनो गुमारेस हु इज अ मॉन्स्टर इन दैट मिडफील्ड. आई थिंक यहाँ पे टीटे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला है इन टर्म्स ऑफ हिज सिलेक्शन फॉर द ब्राजील स्क्वाड लाइनअप जो फर्स्ट 11 खिलाएंगे. एंड बाकी इनकी कमिंग ऑन टू यहाँ पे मैनचेस्टर सिटी, व्हाट डू यू थिंक इज रॉन्ग इन दिस लाइनअप, Adidev sir? I Is something won't say wrong, there or is no, I do we won't say need there's time for them? anything. No, I won't say there's anything exactly wrong with this lineup. I would say you need to credit the opposition for playing on the weaknesses of City, to be very honest, because every team will have its weaknesses. By Okay, sorry, not I'll just cut you short over here. A lot of people would be thinking right now, what is the weakness of City, sir? हाँ, तो मैं ये बात बताता हूँ कि आप जब इन्वर्ट कर रहे हो फुल बैक को अंदर, यू आर लीविंग स्पेसेस आउट वाइड, ठीक है, यू लीविंग स्पेसेस आउट वाइड. नाउ इसी स्पेस को शायद अगर आपको कवर करना है, योर इनसाइड फॉरवर्ड्स और योर वाइड विंगर्स जो भी आप बोलो, ठीक है, उनको, ठीक है, योर वाइड विंगर्स या इनसाइड फॉरवर्ड्स नीड टू बी स्विच्ड ऑन अ लॉट मोर डिफेंसिवली. नाउ अगर मैं जोएल लिंटन की बात करूं, या जोएल लिंटन और एलन सेंट मैक्सिमा बोथ वर रियली कंबाइनिंग वेल on that particular flank to overload the opposition winger or to overload the opposition player on that particular flank more often than not, ठीक है. तो उधर से passes आ रही थी, उधर से शायद प्ले भी बहुत ज्यादा बन रहा था. एंड और एक चीज जो है जो मैं क्रेडिट करना चाहूंगा, जो मैंने बहुत बार बोला भी है, काफी सीजन से बोल रहा हूँ, मिगेल अल्मिरॉन इज अ क्वालिटी प्लेयर, ठीक है. इज व्हाई आई एम सेइंग इज अ क्वालिटी प्लेयर इज उसकी सेल्फलेस, मैं न्यूकासल बहुत टाइम से देख रहा हूँ, उसकी सेल्फलेस रनिंग जो है ना, वो मतलब मतलब इट डजंट हैव एन ऑफ स्विच when it comes to running. He doesn't have an off switch. He will run and he will relentlessly press the other player off the ball. He will make a run so that he can be found in good positions as well. What he was lacking was a finishing touch. ठीक है, what he was lacking was a finishing touch and he got that in this game. आप जो उनकी फ्रंट लाइन प्रेस भी देखोगे ना, आप देखोगे 3 फुल पेसी प्लेयर्स है सामने, ठीक है. एक हो गया विल्सन इज वन ऑफ द मोस्ट पेसी फॉरवर्ड्स आउट देयर इन द प्रीमियर लीग करंटली. Miguel Almiron, Aaron Saint Maxima, you have pace to exploit the gaps that City will have in the wide spaces. तो इसलिए शायद this was, I think this was what was City's undoing, and that was mostly due to Newcastle playing on their weaknesses really well. एक और गुरुजी, एक और मेरा पॉइंट है यहाँ पर. देखिए फोर्डन टू गेम्स कंसेक्यूटिवली हुआ है भाई. दिस गाय हैज एक्चुअली एक्टेड सेल्फिश. ही हैड अ पॉइंट जहां पर ही कुड हैव प्लेड इन हालैंड कपल ऑफ टाइम्स. सो डू यू थिंक जो कांस्टेंट रोटेशन जो करते हैं ना पेप, at some point, मतलब being it a World Cup year, these guys are maybe trying a little bit extra to kind of just be in the starting 11. Is there a reality वहां पर? और ये भी बात है यहाँ पे, Adidev sir जी प्लीज कंटिन्यू. हाँ, नहीं, I think that could be a point, but I don't think so that's a decisive point. I don't think that's a decisive point because right now City as an institution or as a club, they still need to maintain that top spot. Every player understands that. Guardiola would have made them understand it. ठीक है, तो उनको ये भी समझाओ कि भाई वर्ल्ड कप दूर है, अभी तुम अपने क्लब के ऊपर फोकस करो, जिसके साथ तुम ऑलमोस्ट पूरा सीजन रहोगे. मोस्ट ऑफ द कैलेंडर यू विल बी विद द क्लब, यू विल नॉट बी विद योर नेशनल टीम, यू विल बी विद योर क्लब करंटली, ठीक है. सो you need to understand the project that you are a part of, and I think that is they are living in the current zone right now. I don't think so they're thinking about the World Cup too much. That's not a decisive factor, but that may be a factor in their whole scenario, but not a very decisive one, to be honest. मेरे लिए I think Foden has always been the guy whom I have thought of as a final output guy in terms of releasing a pass. मुझे फोर्डन एक बहुत प्यारा गोल स्कोरर कभी नहीं लगा है. He has got that touch, silky touch of a finish, yes, definitely. But then more to me, I was like, भाई ये फोर्डन का रहना पिच पे, it would really help Haaland. And if you've got a player like Haaland in your team who's making those runs, I would want Foden to pick that pass. I would not want him to be selfish because in the runs and behind, Foden is 10 times, Haaland is 10 times better than Foden. So you would want to find him, not always, but when you think that this is the right approach, and क्योंकि Foden के पास वो capacity है to find him,
I'm not talking about any other guy just to भाई pass कर दे हालैंड को, because Foden is Foden, he can find those silky passes. वो मुझे again हमेशा हमेशा वो एटलेटिको मैड्रिड वाला पास याद आता है जो उस गेम में उसने सेंटर द पार्क से होल्ड किया, टर्न किया, पास डाला in behind. So those are the things that Foden has to keep on doing. He has to keep the pitch wide. He kind of cuts in way too much. अगर कट इन कर रहे हो, ड्रॉप इन अ स्लाई बॉल इनसाइड with the runs of जैसे कि अभी मानव भाई गुंडोगन के बारे में कर रहे थे. Yes, obviously we never speak about Gundogan, guys. Gundogan has been one of the main players for this team of Manchester City, still scoring those goals. His arrival in the box is very very underrated part of his game. यहाँ पे Rodri kind of had a little sloppy game as well, but it is all because of the intensity of Newcastle. Like we were talking about Adidev sir, हमें यहाँ पे weakness बता रहे थे Manchester City. I think when the team actually takes the game to Manchester City, वहाँ पे they are kind of a bit shell shocked. Oh भाई ये क्या? You know, they are piling the pressure on you. They are playing good quick football. They are connecting well, switching the flanks well, and they've got good runners to actually challenge City's overloading fullbacks. So that's very important. Again, I'll connect it back to the Chelsea game. वो चीज तभी हो सकती है जब आपके तीनों सेक्शंस जो हैं टीम के, वो तीनों सेक्शंस एक साथ जाएं, कोऑर्डिनेटेड प्रेसिंग हो, एक कोऑर्डिनेटेड प्रेसिंग हो जो न्यूकासल ने बहुत अच्छी तरह से की. बिकॉज आई नीड टू क्रेडिट देयर मिडफील्ड वाज amazing, like Bruno Guimaraes and Joelinton and Joe Willock, all three of them अपने जोन्स को उन्होंने बहुत अच्छे से उन्होंने मतलब जोनल चीजें जो थी, उनकी जोनल डिफेंसिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो थी, उन्होंने बहुत अच्छे से निभाई. ठीक है, क्योंकि अगर आप वो चीज कर सकते हो, देन यू कैन डेफिनेटली मार्क आउट सिटी. एंड देन यू हैव दोज अमेजिंग डिफेंडर्स बिहाइंड यू, दैट इज डैन बर्न. कीरन ट्रिपियर तो मतलब वो गोल थोड़ा उन्होंने बचा दिया, बट कीरन ट्रिपियर आई थिंक हैड एन ऑफ गेम. ठीक है, बट डैन बर्न हैड अनदर किलर गेम. ठीक है, तो आपके पास जो दो डिफेंडर्स भी है, फेबियन शार अगेन टैक्टिकल फाउल लेने के लिए एवरी टाइम ही इज रेडी टू गेट अ येलो कार्ड एनी टाइम ड्यूरिंग अ गेम. ठीक है, मतलब वो जब भी डेंजर स्निफ करते हैं येलो कार्ड खाते हैं फेबियन शार, एंड इट्स फाइन टू गेट दैट जोन बिकॉज दैट्स अ गार्डियोला जोन. अब टैक्टिकल फाउल तो गार्डियोला नहीं सिखाया. ठीक है, तो आप उसके अगेंस्ट ही आप ले रहे हो, व्हिच इज फाइन. सो दीज आर सम ट्रेट्स आई थिंक दैट रियली हेल्प्ड देम यस्टरडे. तो एक और क्वेश्चन मेरे यहाँ पे, फाइनल क्वेश्चन अबाउट मैनचेस्टर सिटी. आपसे भी पूछूंगा मैं, आप दोनों से भी पूछूंगा, मैं अपने भाई लोगों से भी पूछूंगा जो आप देख रहे हैं गाइस. पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेक दिस मोमेंट टू आस्क यू गाइस टू डू चेक आउट द लिंक ऑफ दीज जेंटलमैन्स चैनल, डिस्क्रिप्शन में है, जरूर से आप चेकआउट करें, वहां पे जाके लाइक करें एंड चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए. हमारे चैनल पे भी अगर आपको कंटेंट ये अच्छा लग रहा होगा तो डू ड्रॉप अ लाइक, बिकॉज आपका एक लाइक हमें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा. एंड ऑल्सो सब्सक्राइब इफ अभी तक आप बैठे हो वो लाल बटन को नहीं दबाया. बड़ा मजा आता है देखो यार, बड़ा अच्छा लगता है. बाकी कोई कर लिया करो कभी कभार. साथ ही साथ जस्ट एक अनदर क्वेश्चन दैट आई वांट टू आस्क यू गाइस इज दैट वुड यू नाउ स्टार्ट जैक ग्रिलिश ओवर फिलिप फोडेन? आई एम नॉट सेइंग कि भाई बहुत ज्यादा गंदा खेल दिया फोडेन इज क्लास, आई लव दैट गाय. ठीक है, ही इज वेरी यंग एज वेल, एंड जिस हिसाब से इतनी यंग होते हुए द प्ले द अंडरस्टैंडिंग ही हैज गॉट, वो पेप गार्डियोला का वन ऑफ द मेन मैन है. तो वुड यू समवेयर स्टार्ट ग्रिलिश इन द नेक्स्ट गेम्स? Adidev sir, what do you think? Just अगले मैचेस का क्या लगता है आपको, given how Foden has played and given how Grealish played? We saw in the preseason, although उन्होंने सबसे कम प्रीसीजन खेला है प्रीमियर लीग में, but we saw that connection of Jack Grealish running in behind, providing that cut back to Haaland for his first goals. I think Bayern Munich के against था वो. हाँ, so Foden को I think आप खिलाओगे against teams like a Liverpool or any other team who has a high press, who really adopts a high press, so that Foden gets the space in behind the defense to make those runs. Newcastle didn't exactly have a high press, अगर सही बताए तो, मतलब फेजेस में उनकी हाई प्रेसेस थी, बट जब एक बार हाई प्रेस कर दिया फिर उसके बाद पीछे आ जाते थे वो लोग. once City crossed their midfield, they used to sit in a nice little mid block and used to absorb the pressure, to be honest. ठीक है, तो वो चीज न्यूकासल बहुत स्ट्रेटेजिकली कर रही थी. बट if there is a team which goes on the front foot from the get go, जो है कुछ टीम्स हैं, तो आप फोडन को उधर खिला सकते हैं. जैक ग्रिलिश कहाँ यूज आएंगे? वो जैसे न्यूकासल गेम में यूज आएंगे. क्यों आएंगे? बिकॉज जैक ग्रिलिश गेट्स a lot of fouls, attracts a lot of fouls. ठीक है, because he attracts defenders towards him. ठीक है, एंड उनकी जो डेफ्ट टर्न्स होते हैं उससे वो बहुत सारा फाउल्स लेके आते हैं जैक ग्रिलिश. ठीक है, क्योंकि वो बॉल को काफी अच्छी एडवांस पोजीशंस पे, हाँ, वो बॉल को हॉल्ट कर देते हैं, फिर सडन चेंज ऑफ पेस से, ठीक है, वो डिफेंडर को मतलब he makes those, he halts play, and that gives City the chance to मतलब regroup and then think about what's going to be their next move.
ठीक है, so that's also a good way to actually go about a game rather than just be gung ho, मतलब अभी हाँ, अभी करना है, यही फेस करना में है। करना है गोल, ठीक है। What do you तो think आई about थिंक जी, who would हाँ you नहीं नहीं start right now? अभी नहीं, I just think Adidev Jack sir, आप Grealish. I think next game Grealish. Jack Grealish. For Okay. I was always confident Jack Grealish is going to start on the left. ठीक है, Yeah. this is his season. I think he needs to start on the left. And number 10 में शायद आप फोर्डन को खिलाओ, या आप फॉल्स 9 पे आप फोर्डन, केविन डे ब्रुयना, या ऐसा फॉल्स 9 पे या फोर्डन या हालैंड दोनों को पार्टनर करो, केविन डे Right. ब्रुयना को बॉल विड्रॉन खिलाओ थोड़ा। तो वो Right. चीज़ मैं सोच रहा था which could be great, but Jack Grealish Uh, needs to start the next game. मेरे लिए 2 cents यहाँ पे बिफोर आई कम बैक टू अंकित सर वाज कि आई ऑलवेज थॉट कि फिल फोर्डन वुड बी प्लेइंग एज अ नंबर 8 इन दिस टीम। मेरे लिए फिल फोर्डन मोर ऑफ अ मिडफील्डर रहे थे, बट देन लेटर ऑन वी स्टार्टेड टू सी कि उसको वो राइट पे, लेफ्ट पे, विंग्स पे खिलाने लगे बिकॉज ही वाज एन इंटीरियर, और वहां पे हमने ओवरलोड देखा था फुल बैक्स का, तो विथ ऑलरेडी प्रोवाइडेड थी। व्हाट आई थॉट कि अगर बर्नार्डो का ट्रांसफर होता है, जो पता नहीं क्यों ऐसे मुझे लग रहा है कि इस साल नहीं तो अगले साल बर्नार्डो वुड बी लीविंग, और इफ ही डजंट देन हु नोस, भाई वो अच्छा ही होगा सिटी के लिए। बट अगर बर्नार्डो जाते भी है ना, तो डोंट हैव टू स्वेट अबाउट एनी रिप्लेसमेंट फॉर हिम, दे हैव गॉट अ वेरी गुड रिप्लेसमेंट इन फिल फोर्डन। ऑब्वियसली वो आपको डिफेंसिव एट्रीब्यूट्स नहीं मिलेगी फोर्डन में, बट ही इज वेरी यंग, ही इज जस्ट 21-22 इयर्स ऑफ एज। तो अगर फोर्डन अपने आप को थोड़ा सा डिफेंसिवली स्ट्रॉन्ग बना ले, बिकॉज बर्नार्डो नेवर वाज दैट गाय, बर्नार्डो डिफेंसिवली बहुत सॉलिड नहीं था। यू हैव सीन हिम एट मोनाको, यू हैव सीन इन द अर्ली डेज इन द मैनचेस्टर सिटी, and I didn't think कि Bernardo was the guy who would track back and play even as a double pivot, taking the ball from the defenders and help in retrievals. तो आप जिनचेंको के बारे में बात कर सकते हैं। जिनचेंको सेंटर मिडफील्डर थे, वो आए सिटी exactly, में, वो लेफ्ट विंग बैक बन गए थे, and ठीक है, Pep बिकॉज Guardiola गार्डियोला को ने बोला। क्रेडिट है because he understands the perfect role of a guy, and वो उनमें एक एक्स्ट्रा लेवल देखते हैं कि भाई ये मुझे खोलना है। तो पेप गुardiola का हमेशा वो गेम चलता है उसके दिमाग में कि लेवल अनलॉक्ड, जिनचेंको लेफ्ट बैक अनलॉक्ड, और वो न जाने किसका किसका लेवल अनलॉक करते हैं। तो आई ओनली फील कि यहाँ पे फोर्डन इफ ही इज प्लेड एज एन इंटीरियर मिडफील्डर एज अ नंबर 8 ही वुड आल्सो बी वेरी गुड। बाकी वो तो बात की बात हम देखेंगे। अंकित सर, कमिंग बैक टू यू अबाउट दिस Grealish and Foden thing in the next games, who are you picking right now? Yeah, मतलब मैं सेम चीज ही, मतलब I would echo with Zebai, because the fact is Foden can kind of do what Bernardo can do, or Bernardo in fact can do what maybe a Foden and Grealish, not exactly the same, लेकिन he can kind of win fouls as well. तो मुझे लगता है the only reason why Bernardo has not started in many games, जैसे everyone knows, is because of the Barca links or because of his mental state जो भी है। ये गेम he started there। एक बंदा ये सब चीज में हम भूल जा रहे हैं भाई, वो है रियाद मारेज। भाई रियाद मारेज हैज फैंटास्टिक सीजन लास्ट सीजन, और ये एक Absolutely. बंदा है which I really believe that I thought ये, जैसे गुरुजी ने बोला ना अबाउट ग्रिलिश, आई थॉट ये एक सीजन होगा जहाँ मारेज वुड बी अ स्टार्टर एवरी गेम। I was thinking that way, or I was thinking maybe Bernardo Silva can be a left winger, Foden can be a midfielder guy, or with he'll be a natural progression to maybe a Gundogan or Bernardo Silva in midfield. तो अगेन द बेस्ट पार्ट अबाउट इट इज सिटी के पास इतने सारे ऑप्शंस है। आई वुड स्टिल अभी आज के दिन में आई वुड रादर go with Bernardo Silva on the left hand side as a left winger, because he can kind of do everything. And left hand side, if you remember the Champions League games last season, he did excellently well on that side. So I think वहां पर you get a total thing, और plus Haaland के लिए he is probably a more cleverer passer in that space than a Foden. Right. बिल्कुल सही बात है यहाँ पे। वीरेंद्र भाई कह रहे हैं प्लीज गाइस डोंट स्टार्ट हिटिंग फोर्डन, यस ही हैज अ बैड गेम। नहीं मेरे भाई, वीरेंद्र भाई समझिए ये बात, जस्ट बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्लेयर डजंट मीन वी आर हेटिंग हिम। तो ये इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग मत रखिए आप। नो वन हेट्स एनीवन जस्ट बिकॉज दे आर टॉकिंग अबाउट द प्लेयर यार। ऑलराइट, तो मानव भाई कह रहे बर्नार्डो लीव्स, आई कुड सी for City going to a double pivot occasionally with Rodri, Calvin Phillips, double pivot. Okay, Manav bhai, wow, nice. ठीक है, okay, we can talk about that later. We have talked about the major big games of this Premier League match day. हमने यहाँ पे कुछ मैचेस हैं जो कि ऑब्वियसली मिस होने थे, जैसे हमने ब्राइटन वेस्ट हैम के बारे में बात नहीं की, आर्सेनल के बारे में हमने बात नहीं की यहाँ पे। बट बिफोर टॉकिंग अबाउट दीज क्लब्स, आई जस्ट वांट टू क्विकली गो इनटू लीग अन। एक बार मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ PSG की। 3 मैचेस प्लेड, 3 विंस, 17 गोल्स स्कोर्ड, ओनली 3 कंसीडेड। दे आर ऑलरेडी टॉप 8 ऑफ द टेबल सेकंड विद के 2 अंदर पॉइंट। गोल मार दिया भाई लेटेस्ट गेम में, तो 8 सेकंड 8 शुरुआत के सेकंड 8 के, सेकंड के अंदर मैं यस, देख रहा हूँ मैच, लुक एट मैंने दिस, बोला अरे मेसी का पास, अरे ये क्या हो गया भाई, पास आ गोल रहा हो हो गया गया। गोल। गोल। अरे मैच ये क्या शुरू बात नहीं है किया था भाई, देखना, मैं उससे पहले गोल हो गया। भाई मैं तो साहब बस लोगों को हाय हेलो कर रहा था, हाय गाइस वेलकम बैक, ये वो चल रहा गोल, बूम। तो भाई क्रेजी दैट क्रेजी। इज I that is think that I'll be PSG very brief with my assessment on PSG so far this season. Galtier has understood the roles and the responsibilities for the system
that he has gotten in place, and वो roles and responsibilities को उसने अच्छे से, I think he's conveyed that really well to these players, because if a player like Neymar can track back and do his defensive responsibilities, ठीक है, that means that you've got through to that player really well. That means that you are a Exactly. great man manager. That means that you're just not a good tactical thinker, you are also a great man manager if you can get through to a superstar like Neymar, ठीक है, and make him do these things, which is absolutely great. I think Galtier has really मतलब जो अपनी जो thinking है of his system and the way he wants these players to flourish in their own spaces. I think out wide PSG has become a dominant force out wide. Yeah. Nuno Mendes, Hakimi are beasts now. Are absolute beasts. It is not wrong to say this. I'm loving but Nuno they are the Mendes. best wing backs in Europe currently. इन यूरोप करंटली आप अभी बोलेंगे फार्मर्स लीग में खेल रहा है, ये खेल रहा है, वो खेल रहा है, अरे भाई अगर आप देखोगे पीएसजी का गेम, अगर आप देखोगे अगर वो शायद प्रीमियर लीग में भी खेले, तो आई थिंक दीज टू विंग बैक्स को मैं फिर भी बोलूंगा दीज टू विंग बैक्स आर द बेस्ट विंग बैक्स इन यूरोप राइट नाउ, बिकॉज द वे दे आर प्लेइंग एंड द वे दे हैव, वो मॉडर्न विंग बैक्स की हम डिमांड नहीं करते कि वो जाएंगे बॉम्बार्ड करेंगे पूरा बाई लाइन की तरफ जाएंगे एंड दे विल ईदर ओवरलैप या अंडरलैप एंड दे विल कट इनसाइड, और दे विल प्रोवाइड द cut inside. Neil provide us cutbacks. The cutbacks inside the box, and inside the box there need to be at least 3 people positioned, okay, in good places, okay, and those cutbacks will actually fall right to the feet of one of those. Adidev sir, imagine करिए cutbacks किसके पैरों पे लैंड कर रहे हैं, मेसी, एम्बापे एंड नेमार. Exactly. और कटबैक्स इनके पैरों पे लैंड करेंगे और फिर वो एक अच्छा सिनेरियो बनेगा इन द बॉक्स. और यहाँ पे कटबैक्स की हम बात कर ही रहे हैं. आई थिंक कि नुनो मेंडेस हैज डन अ बिट बेटर इन टर्म्स ऑफ कटबैकिंग दैन अशरफ हकीमी. आई वुड वांट अशरफ हकीमी की भाई हरामखोर एक दो बार आंखें खोल, बगल में मेसी खड़ा है, बॉल डाल दे, कटबैक कर दे. एक दो मैं अशरफ हकीमी को यही कहूंगा सिर्फ कि भाई देख लिए, बस साइड में कुछ नहीं करना, सर उठा देख ले. जब भागता है ना सर, भाई ही इज लुकिंग डाउन. तो जस्ट एक बार टेक अ लुक अराउंड. मैंने चुआमनी का रन देखा था लास्ट टाइम पिछले रियल मैड्रिड के गेम में, तो चुआमनी वाज रनिंग एंड ही वाज लुकिंग कॉन्स्टेंटली ऑन हिज लेफ्ट एंड राइट कॉर्नर. विनीशियस को पास किया, फेडी का गोल आया. सो आई नो एब्सोल्युटली आई एग्री विद यू Adidev sir with this Hakimi and Nuno Mendes point. I won't say कि the best, but I would still say कि one of the best fullbacks अभी currently है वो. मैं बोल रहा हूँ currently हाँ काफी क्लियर है यहाँ पे. आई थिंक यहाँ पे विटीनिया आई थिंक बहुत ही तगड़ी साइनिंग की है यहाँ पे. लुइस कैंपोस और गाल्टियर ने मिलके ये पीएसजी की टीम को ब्लिंग ब्लिंग और फ्लैशी से हटा के थोड़ा सा रामोस भी, मतलब रामोस इज फाइनली कमिंग आउट, मतलब व्हाई इट्स अंडरस्टूड व्हाई ही इज साइंड फॉर पीएसजी नाउ, बिकॉज़ अगर हकीमी उतना आगे जा रहा है, देयर नीड्स टू बी अ पर्सन हु इज कवरिंग ऑन दैट पर्टिकुलर फ्लैंक डिफेंसिवली फॉर हिम एज वेल, एंड रामोस इज डूइंग इट ब्रिलियंटली भाई. मतलब पोजिशनली ही इज सो गुड. He's so good. Positionally, Ramos is so good. Ramos is still Ramos right now. He's so good positionally. He's amazing. Positionally he's very good. But I think Kimpembe is still that. मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी बहुत shaky है. ठीक है, बहुत shaky अपने positioning में. ठीक है, और the way he handles danger, it's very scary to see, because कभी-कभी over commit कर जाते हैं Kimpembe and he leaves spaces in behind, and वो मैंने बहुत बार देखा है Kimpembe के साथ. तो शायद ये सब चीजें भी I think Galtier will have to settle down and think about it, because clean sheets रखना PSG के लिए is still a problem. ठीक है, but कोई नहीं, as long as they're scoring 7 goals they are fine. हाँ मतलब वही है. that is the scene. मतलब आउटस्कोर करते रहो. हाँ. नंबर 50 मेरे भाई, पहले तो यार हम में से किसी का नाम उस्मान नहीं है, सो आई एम सॉरी अगर आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे होगे तो हम नहीं रिप्लाई कर रहे थे. मुझे नहीं पता कि व्हाट वो यू आस्किंग. मैं पहली बार आपका क्वेश्चन देख रहा हूँ. हम कोई व्यूज लेने के लिए यहाँ पे चैनल रन नहीं करते हैं. यू कैन चेक ऑल ऑफ आवर चैनल्स आउट, तो वी ओनली डू इट फॉर द लव ऑफ फुटबॉल. तो अगर आपका एक कमेंट मिस हुआ है, सो डू नॉट गिव दैट स्लैंडर ऑन अस मेरे भाई. आप अपना क्वेश्चन पूछिए. यहाँ पे आपने देखा कि जिसका भी अच्छा कमेंट आया है, व्हाटएवर whoever has been contributing to the live stream, मैंने सबका कमेंट लिया है मेरे भाई. सो जस्ट डोंट डू बुलशिट ओवर हियर.
एंड आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। अंकित सर, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस पीएसजी टीम? नाउ दे हैव लुक्ड मच मोर कंपैक्ट, मच मोर सेटल्ड अंडर दिस गाल्टियर फिलॉसफी, व्हिच हम जो सोचे थे पोचेटिनो लाएगा, पोचेटिनो कभी भी नहीं ला पाया। एंड वी वर थिंकिंग कि गाल्टियर बीइंग अ वेरी स्टर्न एंड स्ट्रिक्ट मैनेजर इन टर्म्स ऑफ हिज स्ट्रक्चर एंड अप्रोच ऑफ द गेम, उसका हमेशा से एक मूल मंत्र रहा है कि मिडफील्ड को इंपॉर्टेंट बनाना है। एंड व्हाट ही हैज डन विद नेमार, मेसी, विटिनिया एंड वरा एंड क्या नाम है इसका, वराटी, इसकी मिड में एक बॉक्स बनाता है जिसका एक डायमंड हेड होता है एम्बापे, who runs in central areas, and we have seen कि Neymar and Messi dropping in to link up the play one at a time and providing always that diagonal run in behind, जिसको कि हकीमी और नुनो मेंडेस और परफेक्ट करते हैं। तो what do you you think have to about give, this PSG team? yeah. I think more than anything, I think firstly यार Galtier and his जो भी टीम है भाई, स्काउटिंग जो की है, the plan जो की है, it's absolutely working out to perfection अभी तक। मतलब I know time will tell, लेकिन I remember जी भाई, we kind of spoke couple of weeks back about Vitinha for example। आप देखिए Vitinha है, Renato Sanchez है for example, right? अब Renato Sanchez is not your guy जो आप rely करोगे week in week out, और that has been his main problem over the years। और when you have a Vitinha who is in that zone जहाँ पर you can still mold him to become that level of player consistently, and he is ideal next to Verratti। और एक बंदा हम काफी बात कर चुके हैं, नूनो मेंडेस। For me, one of the main reasons why Nuno Mendes is really वो उभर के आ रहा है is probably because नेमार। नेमार आप देखो लास्ट सीजन काफी मंथ्स तक he was injured, right? And during that time I think Kylian Mbappe was more drifting towards the left hand channel। और yes, Kylian Mbappe is super from the left hand side, absolutely no two ways about it। लेकिन the thing with Neymar is Neymar भाई पोजीशन भी रखता है, तो वहां पर Nuno Mendes does not really bother, he can easily overlap Neymar, and Neymar can be that guy who can kind of come back and kind of hold position, and he's a brilliant shooter as well from there। So I think Neymar is the guy who's going to be really flourishing उसके साथ Nuno Mendes के साथ। और of course दोनों ही मेरे ख्याल से that is the partnership really to look forward to this। और of course if Ramos can stay fit, तब ये बिग क्वेश्चन मार्क है। अभी भी मुझे लगता है लास्ट में 7 दिन बाकी है, स्क्रीनियर के लिए शायद वो लोग टेम्प्ट हो जाए बिकॉज रामोस ब्रिलियंटली कर रहा है, इंटर नहीं सेल करेगी, मना कर दी इंटर, नहीं करेगी, they won't sell, लेकिन no। they need a cover that can be their Achilles heel। मतलब मुझे वो Diallo लग है रहा है सिर्फ कि यहाँ in पे, this formation they don't have, हाँ exactly, ये बैक थ्री खेलना बहुत सही और फिट हो रहा है उनके लिए, बिकॉज वो हकीमी को और नूनो मेंडेस को कवर राइट और लेफ्ट साइड से मिल रहा है। The thing is कि only they need depth, वो 50 गेम्स कैसे खेलेंगे ये सब लोग, वही ओनली क्वेश्चन। लेट्स सी, मतलब अभी टाइम है। पीएसजी बीइंग पीएसजी कैन ऑलवेज स्पेड यार, आई नेवर नो लास्ट मिनट में। लेकिन आई एम रियली प्रेडिक्टिंग भाई पीएसजी, मैंने तो बोला है फॉर ऑल ऑफ योर यार, आप लोगों ने सुना होगा, मैंने बताया जो चेल्सी 2000 से लेकर 2010 से हम डील करते हैं चैंपियंस लीग, I am not in that boat जो बोल रहा है भाई that PSG is a bottler or Man City is a bottler। I genuinely believe that PSG slowly but steadily they are moving one step beyond, and they needed a manager who gets the best out of that front three। और वही ये जो midfield जो आप दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, that is the best midfield which will be able to do that। Only caveat being कि भाई क्या रामोस आपको दे सकता है around 50 games a season, that is the biggest question for me। राइट, एब्सोल्युटली, ये बिल्कुल सही बात है कि क्या रामोस वहां पे फिट रह सकते हैं अपने एंटायरिटी ऑफ द सीजन एंड कैन प्ले एट दैट लेवल। एंड भाई मेरे लिए तो नेमार का ये सीजन हैज बीन रियली गोइंग astonishingly well। Neymar, if he stays fit as well, like we were talking about fitness of Sergio Ramos, मेरे लिए Neymar का fitness भी रहना बहुत बहुत ज़्यादा important है, because I believe कि this guy is the game changer for this team of PSG, scoring the goals, assisting, and साथ ही साथ yes, Leo Messi, we haven't talked about Leo Messi in this team as well। looks much more comfortable, looks much more at home। ऐसा लगता है कि गेम प्ले समझ आ रहा है, प्लेयर्स को समझ आ रहा है मेसी का गेम प्ले, एंड गाल्टियर इज यूजिंग मेसीज लीथल फोर्स, उसको ड्रॉप बुला के ही इज प्रोवाइडिंग द रन्स, ही इज मेकिंग द passes to the runners in behind। Kylian Mbappe, Neymar क्योंकि बहुत ज्यादा क्लोज एंड इंटीरियर खेल रहे हैं, they are connecting well, तो ये फ्रंट ट्राइडेंट फाइनली हमें एक अच्छे तरीके से क्लिक करके नजर आ रहा है। और यहाँ पे जो थोड़े से दोनों के बीच में मैं बस एक पॉइंट ऐड कर चुका हूं दिस मेसी थिंग कि ऑल्सो द पार्टनरशिप ऑफ वेराटी एंड विटिनिया दोनों जो बैलेंस लेके आते हैं, उसकी वजह से जो वर्टिकलिटी आती है पीएसजी की, जो रेगुलर वर्टिकलिटी आती है वाइल इन पोजेशन, वो मेसी को बहुत हेल्प कर रही है, क्योंकि मेसी हैज दैट सिक्योरिटी इन बिहाइंड सो दैट ही डजंट हैव टू ड्रॉप बैक सो मच एज टू हेल्प आउट to build out from the defense or to get those raking balls in from the defense। उतना defense से उतने वो और पीछे उतना नहीं आ रहे हैं जितना शायद पहले आया करते थे, ठीक है, to help out the midfield a little bit more in ball progression, because Vitinha and Verratti are well versed in it now। Vitinha and Verratti दोनों जो अभी पार्टनरशिप बना के जो बढ़िया से वो बॉल प्रोग्रेशन को हेल्प कर रहे हैं, that is really helping out
the front three, because the front three Right. really उनकी energy को manage कर पा रहे throughout the full 90 minutes, so that is great. एग्जैक्टली एक चीज बस यहाँ पे विटीनिया के बारे में आई वुड जस्ट वांट टू सी विटीनिया इंप्रूव ऑन वन एस्पेक्ट ऑफ द गेम दैट इज मोर वर्टिकल पासेस। आई थिंक विटीनिया बेसिकली थोड़ा सेफ खेल रहे हैं और कह सकते हो आपके भी जस्ट नए नए साइन किए हैं तो ही इज अंडर दैट प्रेशर और वट एवर वी वांट टू कॉल इट। साइडवेज पास करते हैं, बॉल रिटेंशन रखते हैं। आई थिंक ही इज दैट गाय जो कि ना वर्टिकलिटी से ज्यादा लैटरल विथ मेंटेन करते हैं Lateral विद हिज passing, पासेस। but I think यस he एंड drives with the ball as well. No, he drives with the मतलब ball. Yes, he likes to carry the ball. He goes forward the ball. But then correct. पिछले जितने मैचेस मैं इनके फर्स्ट प्री सीजन मैच से लेके अभी तक के सारे मैचेस देखा हूँ, what I have learned is कि 80% of Vitinha's passes are sideways passes. I think he just Correct. has to open his body a bit to just lob that ball swinging because Hakimi and Nuno run डालते हैं तो Vitinha Run डालते हैं. if he's playing on the left hand side can turn his hip around and right hand side से he can give a looping ball to the running players or my vertical scene is balls डाले. आप बैलेंस अगर कर रहे हो, Verratti will prove that Verratti will give you that verticality because Verratti has that passing फन range. बात यहाँ पे अधिदेव सर ये है कि इवन वराटी wasn't doing that. हाँ, पिछले but जितने मैचेस हाँ मैंने देखे हैं पिछले इवन वराटी wasn't doing that. That was done by Leo Messi being there. तो मेसी ये क्या करते हैं, विटीनिया रिकवर्स द बॉल, वराटी हेल्प्स इन टैकलिंग एंड रिट्रीविंग द पोजीशन, मेसी का डीप आने से ही स्प्रेड्स द प्ले। तो ये तीनों का एक जो रोल है ये बहुत क्लियर सेट है। आई जस्ट फील कि थोड़ा सा और रोल्स अपने डिस्ट्रीब्यूट कर लें, खासकर ये दो मिडफील्डर्स, इट वुड रियली हेल्प देम कंबाइन विद द अदर प्लेयर्स बेटर। गॉट इट, ठीक है। तो Zibai, can Balde be like Nuno if given proper chance? हाँ, यहाँ पे we are gonna talk about only for a few minutes talk about Barcelona. Can Balde? I think Balde in the first start of the season, I think he was really really good for Barcelona. Can he be like Nuno? I think दोनों की एज ऑलमोस्ट सिमिलर है। आई थिंक नूनो भी 19 years old है, बाल्डे भी ऑलमोस्ट सिमिलर एज के हैं। आई वोंट से कि यार एकदम एग्जैक्ट वही प्रोस्पेक्ट है, एकदम एग्जैक्ट वही चांसेस हैं कि बंदा उस हिसाब से खेलेगा, बट देन ही इफ ट्रस्ट दिखाओगे ही कैन रियली डू गुड। पिछले मैच में आई थिंक बाल्डे वाज रियली रियली सॉलिड, ही डिड अ वेरी गुड जॉब अकॉर्डिंग टू मी। सेकंड हाफ में ही वाज वेरी गुड और हमने देखा बार्सिलोना ने वो जो पहला गोल मारा स्टार्टिंग मिनट्स में लेवांडोव्स्की का, उसमें भाई बाल्डे का कितना इंपॉर्टेंट हाथ था, एक्चुअली असिस्ट ही था पूरे मैच में। आई थिंक आई वाज हैप्पी विद द वे बाल्डे हैज प्लेड। सो अंकित सर, जस्ट गोइंग starting with you, what do you think about Barcelona's win against Real Sociedad, जो 4-1 की विन थी इनकी? What did you perceive about the game? ऑनेस्टली स्पीकिंग मतलब मैं एक्सपेक्टेड मोर फ्रॉम बार्सिलोना, सच में बोलता हूँ। आई नो यहाँ पर भी यार बहुत ही अर्ली गोल हो गया था, बट ओवरऑल जो गेम प्ले की बात करी, आई थिंक यहाँ पर देयर आर सर्टेन रोल्स, जैसे यू सेड अबाउट बाल्डे, लाइक ही डिड एक्सीलेंटली वेल, लेकिन फॉर टू सम एक्सटेंट आई थिंक पेड्री जो है मिडफील्ड में, ही वाज आस्क्ड टू डू लिटिल बिट मोर देन व्हाट आई वुड हैव एंटिसिपेटेड। मे बी आप बोल सकते हो डियोंग डिड नॉट हैव हिज ए गेम बिकॉज ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन, दैट इज पॉसिबली एक रीजन हो सकता है। लेकिन डेम्बेले ऑन दैट लेफ्ट हैंड साइड is someone that I would rather want to see him on the right hand side, just going for directly defenders के साथ जाए। Overall, लेकिन I think I was more disappointed by Real Sociedad despite that early goal. They did not kind of come back and kind of give more pressure to that Barcelona backline. यहाँ पर अगर positively बात कर सके तो in terms of the formation, what जो मतलब Xavi ने कर दिखाया, by that kind of flexibility it's happened within a couple of weeks literally, जो he's kind of changed that formation as well. लेकिन at times again I think initially गुरुजी ने बोला था about Lewandowski dropping back, if that is happening in between the game, means your midfield में जो खाली पेड्री अकेला नहीं कर पा रहा था, maybe Lewandowski needs to do a little bit more of, or would you say Ferran Torres का सही position है वो, because Ferran Torres for me is probably not a proper, he's not a number 8 per se. He's really someone who can kind of stay wide or rather be a false 9. मैं देखना चाहूंगा Ferran Torres in that role. Again, maybe मेरे expectations ज़्यादा है because of what Barca did to Chelsea, the kind of number of signings किए, लेकिन overall मैं बोल रहा हूँ ना, I still expect Barca to kind of really really dominate. First half में they were not that much on top of Real Sociedad compared to what I expected. They were nowhere. इसलिए मैं सोने चला गया था फर्स्ट हाफ के बाद। सॉरी चैट, आई कांट कंट्रीब्यूट टू दिस कन्वर्सेशन। नहीं आदित्य, सभी रियली रियली अंडरस्टैंड। मैं बता रहा हूँ, अगर मैं लाइव नहीं होके मैच देख रहा होता तो आई वुड प्रोबब्ली हैव जस्ट लेट डाउन एंड मैं अपरेंटली सो नहीं, गया मैं होता। जितना ही मैंने फर्स्ट हाफ में देखा यार, मैं फर्स्ट हाफ पे ही मैं ऑब्जर्वेशन देता हूँ। बुस्केट्स का मिस वाज वेरी एविडेंट। यू कांट प्ले पेड्री डीपर देन गावी। बाय एवरेज पोजीशन जो देख रहा था फर्स्ट हाफ में, पेड्री for me was playing deeper than Gavi, and I was like, how is this happening? मतलब वैसे तो you should play both of them a little bit more higher, ठीक है, that is there, ठीक है, but
आपको बुस्केट्स की कमी के लिए आप दोनों फ्रैंकी डे जॉन्ग और पेड्री को डीप खिला रहे हो, which is weird. मतलब थोड़ा weird लग रहा था looking at that midfield setup, like just to compensate for Busquets का absence, you have to really jig around with that whole midfield setup to that extent. That was madness. लेकिन कैसी यार, मतलब आर यू सरप्राइज गाइस कि कैसी को, मतलब आई नो दैट ही इज स्टिल गेटिंग, मतलब एक बारसा प्लेइंग स्टाइल, ही इज जस्ट गेटिंग यूज्ड टू इट एंड ऑल दैट, आई अंडरस्टैंड टोटली भाई, लेकिन गावी has been superb, लेकिन गिविंग दैट रिस्पांसिबिलिटी वर्सेस कैसी, जो कैसी का मोर नेचुरल पोजीशन है, आई वाज नेचुरल लाइक रोल है, नहीं भाई कैसी एग्जैक्टली। को शुरू करना चाहिए था मैच। यही तो अंकित सर मैं तो वंडर कर रहा था व्हेन दे वेंट विद दिस लाइनअप, फ्रैंकी डियोंग, गावी, पेड्री। एक्चुअली स्टार्टिंग के 15 मिनट में ना गावी डीएम खेला था विद फ्रैंकी डियोंग, बट जब जावी को समझ में आया कि यार ना हो रहा है इससे, इज नॉट दैट काम ऑन द बॉल, ही इज देयर एक्सप्लोसिव वॉल्केनो, तो उसको थोड़ा फॉरवर्ड डालो। तब 16 मिनट पे पेड्री को उन्होंने पीछे डाला और एक फॉर्मेशन थी 3-3-3-1। बार्सिलोना वो प्लेइंग इन अ 3-3-3-1 फॉर्मेशन, जहां पे 3 सेंटर बैक्स, 3 मिडफील्डर्स, बाल्डे टकिंग इन एंड मिड 3 विद फरान टोरेस प्लेइंग एज अ कैम, डेम्बेले एंड गावी अप टॉप एंड लेवांडोव्स्की। बाद में मुझे लगता है कि सेकंड हाफ में हमारा सेटअप सही हुआ जब सब्स्टिट्यूशन होते हैं, रफीना कम्स इन, जब आंसू फाटी आता है। एक्चुअली फरान टोरेस का रोल थोड़ा सा आज इट वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ रोल। फरान टोरेस वाज प्लेइंग दैट ब्रूनो फर्नांडिस रोल एट मैनचेस्टर यूनाइटेड, जो पिछले मैच में उन्होंने खेला था। वो फ्री गाय जो कि मिडफील्ड में ड्रॉप करके पोजीशन रिसीव करेगा एंड एवरीथिंग। तो आई थिंक मुझे इंटरेस्टिंग लगा। ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज कि आप लोग व्हाटएवर गोल्स देखो, 4 गोल मारे बारसा ने, बहुत खुश हो जाए हम। आई एम जस्ट गोना से इज कि मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग अप्रोच लगा इस पूरे जावी कल के मैच का। जावी ने किस हिसाब से टीम को फॉर्मुलेट किया टू क्यूरेट फॉर द एब्सेंस ऑफ बुस्केट्स, पैनिक को नहीं इस्तेमाल किया, कैसिए को इस्तेमाल नहीं किया, एंड जिस हिसाब से उसने अपने टैक्टिक्स को चेंज किया सेकंड हाफ में, इट रियली शोड कि जावी अंडरस्टैंड करते हैं इस गेम को इस लेवल पे, एंड ही हेल्प्ड एक्चुअली, उसके सब्स्टिट्यूशन हेल्प्ड get them this win. Ansu Fati number 10 अपना लौंडा वापस से he has been explosive and scoring the goals, तो I'm really happy with that. And Lewandowski पहले भाई, Lewandowski gets his goal. तो before closing this stream I would just एक बार 2 cents upon Bayern Munich thrashing Bochum 7-0। हम लोग बायर्न के बारे में बात नहीं करते हैं, लोग बहुत ज्यादा हमसे अपसेट रहते हैं, सो वी जस्ट गोना टॉक अबाउट देम। बहुत ज्यादा तो नहीं है इनके बारे में बात करने को, क्या ही बताएं भाई। हाँ भाई, 7 गोल मारा, 22 शॉट थे, 12 शॉट ऑन टारगेट थे, इनको टोटल मिला के 10 गोल तो मिनिमम मारने चाहिए थे। व्हाट डू वी थिंक अबाउट दिस टीम ऑफ बायर्न म्यूनिख? अंकित सर आपसे स्टार्ट करूंगा मैं। Yeah, by the way, Nagelsmann has finally got it. How to make them click. Looks like again Sadio Mane in that free role is doing excellently. मतलब एक outlet हो गया है वहाँ पर. You know that you are having proper wingers और वहाँ पर आपके पास है Sadio Mane जो कभी कभार he can interchange with your winger as well. तो overall मैं बोलूँगा Bayern Munich probably यार मतलब मैं थोड़ा बड़ा बोल रहा हूँ लेकिन Bayern Munich for this season they are one of the Champions League favorites. मतलब probably मैं बोलूँगा आज के दिन में they are probably the favorite depending on the tie. मतलब हम देखेंगे क्या होता है in terms of draws and everything, but they are that good on their day. Really they can do well. Yes, Farmers League you can say that about Bundesliga, but obviously मैं बोल रहा हूँ other teams in the Bundesliga वो लोग क्या कर रहे हैं भाई. मतलब look at this team. I can seriously consider that अगर मुसियाला खेले फॉर एग्जांपल, जस्ट थिंक अबाउट इट, अब मुसियाला अगर आते हैं, he can fit in left wing, he can fit in central midfield, he can fit in the forward role. फर्स्ट टीम में खेलते हैं, this is not their best team. Exactly. They put here. नहीं है तो you have player जो multiple position में खेलते हैं. Sadio Mane again, he's your forward, he's your wide player as well. आप देखो, you have so many players जो multiple roles में खेलते हैं, and the quality of those players is second to none. तो easily I would say in terms of midfield and attack, and Sabitzer finally you can say that भाई जो Nagelsmann ने दावा किया था, लग रहा है भाई, मतलब he can become that player, who knows. Because last season Sabitzer was fairly average, fairly average, exactly, fairly average, and this season I think Sabitzer still has a lot of work to do, to be very honest. ठीक है, क्योंकि अगर उनको fit in करना है in a team like Bayern Munich and with the competition that they have for midfield places, he has to do a lot to actually prove that. And definitely I think with the 7-0 scoreline, I think एक चीज तो आई होगी कि नागल्समैन के दिमाग में कि whatever is working on, it's going right for them. But I think Bundesliga is not what they should work towards. I think it's very evident what they want to work towards is the Champions League. ठीक है, is the Champions League. So that is right for PSG as for Bayern, दोनों के लिए कि if both of them are doing wonders in the leagues that they are in, great, very good. But अगर दिक्कत ये है ना, Champions League लोग इनको
बहुत रिस्पेक्ट देते नहीं, बिकॉज बहुत इजी है नकार देना, अरे ठीक है 7 गोल तो ये फार्मर्स लीग, अरे बहुत इजी है, पीएसजी ने हाँ 7 हाँ गोल हाँ। मारा, वो भी फार्मर्स लीग है। लोग एक्चुअली देखते नहीं है। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं दोनों लीग को कंपेयर करूं, आई वुड राइट नाउ से ओपनली लीग वन इज हार्डर टू स्कोर दैन बुंदेसलीगा। लीग वन की डिफेंडिंग इज हाँ, हाईली फिजिकल एंड काफी ज्यादा इंटेंस फुटबॉल वहां पे होता है। बुंडेसलीगा इज वेरी मैं कह रहा ओपन हूं बिकॉज आई फुटबॉल, हैव सीन एग्जैक्टली वेरी बुंदेसलीगा ओपन। काफी ओपन, नॉट इवन सेइंग कि बुंदेसलीगा में स्कोर करना डिफिकल्ट है, ऑल आई एम सेइंग इज कि बहुत अलग अलग फैक्टर्स होते हैं अलग अलग लीग्स में मेरे भाई। सो आप अपनी जजमेंट इतनी क्लाउडेड मत रखिए कि यू कैन जस्ट गो ऑन एंड टॉक अबाउट इट हार्मलेस लीग। थोड़ा सा जस्ट गो एंड वॉच, ट्राई टू एंजॉय, ट्राई टू सी कि व्हाट कैन हैपन। अगर बान 7 मार सकती है ना, तो किसी दिन बोकुम 4 मार सकती है, एंड दे हैव डन दिस। तो द थिंग विद बान मोनिक राइट नाउ, जो अधिदेव सर कह रहे थे यहाँ पे कि इनको फर्क नहीं पड़ता है बुंदेसलीगा में क्या करे, कहाँ तक जाए, द मेन मैटर इज कि ये चैंपियंस लीग में कहाँ तक जाए। आई स्टिल, पता नहीं क्यों बान मोनिक स्कोरिंग ऑल ऑफ दीज गोल्स, कितने गोल मार चुकी हैं इन 2-3 मैचेस में बुंदेसलीगा में, आई स्टिल फील कि आई एम वेटिंग फॉर अ टफर कंपटीशन एंड दैट वुड स्टार्ट इन द चैंपियंस लीग अलोन। That's a fair point. Absolutely. मतलब आप उस पर ही जज करोगे ना, when you don't have week in week out वाला गेम प्ले. But I genuinely feel मतलब they have the entire package जो चाहिए आपको. Yes, you can say Lewandowski missing है, but again Sadio Mane, highly underrated player, has transformed himself already in my opinion. एग्जैक्टली एंड संकल्प भाई यहाँ पे पूछते हुए कि क्या हम में से कोई सीरिया है, भाई मैं बता दूं मैं बहुत एविड फैन हूँ यहाँ पे सीरिया का, एसी मिलान फैन, एंड यहाँ पे अंकित सर भी एसी मिलान फैन। तो हम लोग जरूर से देखते हैं, फॉलो करते हैं ब्रदर, सीरिया Juventus. आ ये को। और यूवेंटस यहाँ की पे जर्सी यूवे, पहनी है यार। वही मैं कह रहा हूँ, अब आ ही रहा था बस आप पे अधिदेव सर की, यहाँ पे यूवेंटस की जर्सी हाँ, पहन के बैठ रखे अधिदेव सर, एंड हमारा मन करेगा तो हम उसके बारे में भी बात कर सकते हैं सीरिया के बारे में, बट देन आज काफी ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है, सो वीड लीव दैट फॉर अनदर टाइम। आर्सेनल के बारे में हमने बात नहीं किया बिकॉज आर्सेनल और मैंने मैड्रिड और कुछ टीम छोड़ रखी है, क्योंकि उनका मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी रिव्यू कर रखा है, तो आप जाके मंडे वाले मैच डे एनालिसिस में, संडे के एनालिसिस में जाके आप देख सकते हो, आपको पूरा रिव्यू मिल जाएगा मैड्रिड का गेम और आर्सेनल का गेम बात किया ऑलरेडी, तो यहाँ पे रिपीट करने की जरूरत नहीं लगी मुझे। सो जो भी लोगों को लगता है कि हमने कोई गेम मिस किए, डू लेट मी नो, अगले स्ट्रीम में हम जरूर से उनको कवर करेंगे। लेट मी टेक दिस मोमेंट टू थैंक्स अधिदेव सर, काफी टाइम बाद हमारी बात हुई, बट देन विल ट्राई टू कीप दिस गोइंग। अधिदेव सर बहुत बहुत शुक्रिया फॉर कमिंग ओवर हियर, बहुत मजा आया आपसे बात करके, आपके इनसाइट्स लेके अबाउट ऑल ऑफ दीज गेम्स। एंड अंकित सर, एज ऑलवेज इट्स अ ह्यूज प्लेजर to have you on the channel, and it was real fun, मजा आया काफी। Always fun यार. डेफिनेटली, मतलब ऑलवेज यार, ये ऑलवेज। weekend was crazy. We had to discuss. बहुत बहुत बातें तो बच भी गई, बट बच ऑब्वियसली गई। टाइम कंस्ट्रेंट्स। सो यस, वी आर ह्यूमंस इन द एंड, सो एग्जैक्टली। yes we are not the goats, we are not Cristiano और मेसी की हम एकदम हम अपनी चीजों को परफेक्टली कर दे, सो यहाँ पे we will err, तो कोई दिक्कत नहीं है गाइस। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर, आप लोग जो भी लोग यहाँ पे स्टिक अलॉन्ग किए हमारे साथ, तो हमारी बकबक सुनने के लिए, एंड थैंक यू। प्लीज दोनों भाइयों का चैनल चेकआउट करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एंड हम आप लोगों से मिलेंगे वेरी सून। अंटिल देन, गुड नाइट, टेक केयर, पीस आउट गाइस, एंड बाय बाय, मिलते हैं।